Hello. Welcome to the stream, guys. माइक वॉल्यूम कम क्यों आ रही है थोड़ी? मिक्सर में मुझे कम लग रही है. Take it easy. ओके, गेम कैप्चर हो गया है शुरू. यहाँ पे भी क्रिस्टल फ्लाई होती है. पहले आई थिंक इसी को फिनिश कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है ये. जल्दी हो जाता है, इसमें कुछ करना तो होता नहीं है. वाला इवेंट काफ़ी वैसे टाइम पास है. 500 हो गया ना, 700 करना है तो 2 बारी में हो जाना चाहिए. 130 110 तो मिल ही जाता है हर बारी में. Illusion shattered. The wind knows one with wind and cloud. One with nature. The moon. Time to go. Into the wind. Time to go. Fallen leaves. Adorn my night. Detached from the world. Time to go. What could the children be up to? Never mind. Let them... One with nature. One with wind and cloud. Time to go. All right, you act. ये वाला काफ़ी आसान है, इसमें बॉम्ब्स आते रहते तो बस उनको लॉन्च कर दो, ज़्यादा कुछ डैमेज करना नहीं पड़ता. Wherever. The wind moves fair. Fallen leaves.
begun. The thunder. वैसे मैं तो उड़ भी सकता था इसके अटैक से, जैसे अभी ये वाला डॉज किया मैंने। Adorn my night. फिर आयो कैसे लग गया? The mortal plane. A fleeting. 4.6 लाख का उसने वो मारा मुलानी ने हाइड्रो डैमेज। One with nature. Followed. मर ही जा रही है वो। Into the wind. The hearth. What kind of kite? The thunder pulse. Off we go. Into the wind. One with wind and cloud. This shall not be my fate. ये सब मर गए एक एक बारी, मैं ही नहीं मरा बस। वो पता लगे कि मैं दूर दूर से खेल रहा था। 128 तो 520 हो गया है बस, सॉरी 620 हो गया होगा। बस एक और बार हमें खेलना है तो उससे पूरा हो जाएगा इवेंट का जो भी रिवॉर्ड्स है। क्योंकि मोरा फार्म कर रहे हैं तो फिर ये क्यों छोड़ दें हम, जब मोरा फार्मिंग कर रहे हैं तो ये क्यों छोड़ दें हम। तो इस बार मैं अपना बेनेट लेके चलता हूँ। A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. The most important part of going out to have fun is, well, going out. So just show up and I'll handle the rest. तो रैंड नाविया और गामिंग Going in! That's the thing! Many happy returns. Adventure time. Off we go! Time to testify. Adventure time. Everybody stand back! Move it. That's the thing! Up to it, Mata. Your name on it! मेरा काम होगा बस इनको जिंदा रखना, बाकी तो ये खुद ही कर लेंगे। No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. I'm going in! Let's light it up! Sorry, Feeling lucky? अरे अच्छा हुआ वो आया का नहीं लाया, कल आता तो उसका बैंड बज जाता क्योंकि उसका वो तो चलना बंद ही हो जाता। आयो Adventure time. Teamwork is dreamwork! Let's light it up. I'm going in!
बॉम्ब क्यों नहीं आ रहे? All right, let's finish this fast. Let's light it up. Feeling lucky? उसमें हमने We go. तीन बॉम्ब फेंक दिए लास्ट में। Let's light it up. हाँ भाई, अभी तक हम तीनों स्टेजेस में 30 लेके आए हैं, लेकिन आई गेस 1 एक्स्ट्रा किस चीज़ के पॉइंट्स मिल रहे हैं फिर? Let's go find some treasure. Adventure time. Going in. Let's light it up. Shoot on sight. This one's got your name on it. Everybody Stand stand back. back. Your name on it. Get out of here. Well, with rock. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Adventure time. Get out of here. I'll do it, Mata. From the speed of love. Time to testify. Let's light it up. Going in. Fellow warfare, I guess. Mighty mythical beast. Let's light it up. Stop it now. Speed with love. सबका एक ही आया भाई, एफिशिएंसी अबव ऑल 138 हो गया। चलो 700 क्रॉस हो गया, सारे रिवॉर्ड ले लिया हमने इवेंट के। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आर्कॉन कर लेते हैं, आई थिंक, या तो आर्कॉन या फिर एक मिनट, मेरी वर्ल्ड में है क्या सब? पहले सिंगल प्लेयर करते हैं क्योंकि कुछ ऑप्शंस गायब हो जाते हैं, इसलिए नहीं करें। चलो बढ़िया, ये हो गया इवेंट खत्म। मैं तो ये हैरान हो गया, एक और इवेंट आ गया है। मेरे को तो लग रहा था एक और इवेंट नहीं आएगा अभी। रचित वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, क्या हाल है? हाँ 52 पुल्स, अभी हमें 8 पुल और चाहिए। दिवाली सफाई खत्म की आज ये तो होता ही है, अभी हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ। वैसे ज़्यादा कुछ गंदा है भी नहीं, लेकिन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो। अच्छा, मैं ये भी नहीं कंप्लीट कर सकता। अच्छा, इसके लिए अब मेरे को पहले आर्कॉन करनी पड़ेगी। चलो आर्कॉन ही कर लेते हैं। कितनी आई है, कितने ऐप्स आए हैं आर्कॉन के, कोई आइडिया? फुल कर लो या फिर कार एक्ट तक। कार्ड क्या होता है? कार्ड का आइडिया नहीं है मुझे। अभी तो डायरेक्टली चला दी इन्होंने। चलो देखते हैं क्या है। कौन?
अबे ये वॉइस लाइन ही नहीं है, काय की यार कौन है फिर ये? जहाँ पे सामान रखते हैं ऊपर के साइड। अच्छा अच्छा अच्छा, यू मीन लॉफ्ट। हिंदी में उसको ताक नहीं कहते, ताक किताबें, मतलब पहले मैंने सुना था कि तुमने किताबें ताक पे रखी हुई Oh, है। wait, so आई थिंक Kachina हमारे and the यहाँ Traveler also लोग know about the मतलब plan? हमारे स्लैंग में वो ताक है जहाँ मैं रह रहा हूँ। या मतलब मैंने तो घर में ताक सुना, किताबें तुमने ताक पे रखी हैं। यार इन लोगों की आवाज़ ही नहीं है यार, ऐसे कैसे आधी अधूरी? अब मैं पढ़ने तो बैठूंगा नहीं ये सब, यार कौन भी बर्बाद जाएगी फिर। Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your ये side कहावत is इसी पे है perhaps ना the कि best पड़ा solace ताक when पे रख, मतलब कोई facing भी such चीज़ a को bleak ताक पे reality. रखा है तो यानी ऊपर रख दिया तुमने, छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया। जैसे लॉफ्ट में हम सामान डाल देते हैं स्टोर के लिए। ये मैंने बहुत सुना है बचपन में। See, Lolly knows him too? यार ऐसे तो यार मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, वॉइस लाइन्स ही नहीं है। अब ऐसे तो स्किप करने का मन कर रहा है, ये तो वर्ल्ड क्वेस्ट टाइप लग रहा है। Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Auroran, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. अरे ओरॉन को कह रहे हैं 4 स्टार है और काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ है। यूएस और वेस्ट साइड ओरॉन को अच्छा, मतलब उसका कैरेक्टर डिज़ाइन उतना भा नहीं रहा लोगों को, लेकिन चाइना और इस साइड Makes बहुत sense. लोगों But को Paimon तगड़ा wonders लगा how वो। Seat Lolly could be the first one to notice Auroran's disappearance if she spends the whole day in her room. यार मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, Huh, तो so स्किप if I'm करने का मन following, कर रहा है। you mean we'll help her investigate Auroran and Order from the buyer, Yeah. Plus, we kind of owe her one anyway to make up. Ah, this is a pretty well thought out plan. As expected of Molly Poke Nietzsche. Then, yeah, I'll leave my letter. Okay, then let's. ताक अब बस चल। ये बड़ी सही चीज़ लाई है इन्होंने एक्सप्लोरेशन के लिए ना, काफ़ी फास्ट हो जाता है ऐसे, मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा सा मूवमेंट में, वरना इरिटेशन होती है ना कि क्या यार कौन चल के जाए, कौन ये करे, थोड़ा सा वो हो जाता है इसमें इजी। आज ही पुल मार दो शिलालेन पे। आज ही का दिक्कत ये है ना, मैं बीच में नहीं अटकना चाहता, जैसे 80 तक पेटी जाती है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 10 पुल किए हैं अभी, तो मैं 70 पुल बना के रखूँ कि मैं 80 तक तो चला जाऊँ। बाकी मुझे जल्दी मिले लेट मिले उससे मुझे फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि पुल बचेंगे या ख़त्म होंगे। कितना बोला है? अनटिल द मॉर्निंग ऑफ डे आफ्टर टुमारो। अच्छा 2 दिन स्किप करने हैं, तो मैं वो बीच में नहीं पढ़ना चाहता कि भाई अच्छा नेक्स्ट में ही आ जाएगी, नेक्स्ट में ही आ जाएगी। 140 होते ही पुल कर, मतलब 160 प्रीमो होते ही पुल कर दो, 160 प्रीमो होते ही पुल कर दो। वो एक एक पुल में मेरे को मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 70 तक पहुँच जाऊँ, और एक बार 70 तक पहुँच गया तो अभी 62 है, तो ये जो इवेंट आया नया, इससे मे बी 1-2 दिन में, और ये
60 हमें इससे मिल जाएगा और आर्कॉन करने का 500 और मिल जाएगा, तो 3-4 पुल ऐसे बन जाएंगे। बाकी इवेंट से ट्राई करूँगा। अगर ज़्यादा जल्दी करनी हुई पड़ी तो फिर मैं ग्लिटर लगा दूंगा। दो ही पुल ले पाऊँगा, लेकिन ग्लिटर शायद मैं नहीं यूज़ करूँगा, पता नहीं, देखते हैं। अब ये कर तो दिया, और कितनी देर? आज ही का तो दिन है, डे आफ्टर टुमारो, तो 2 दिन हो गए ना, कर तो दिया। Oh, it's time to meet up with Shilonen. Let's ask her how things have been going. Hey, Shilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Paimon. I have bad news. Seat Lolly did not reply to our request. Although, I suppose I'm not too surprised. 76 तक आ जाता है, बाकी ग्लिटर भी है। ग्लिटर भी तो मिलेगा if you pull 5 multi almost 10 plus 10 master ग्लिटर भी हो जाता है, 2 extra pulls। Huh? ग्लिटर में कम खर्च करता हूँ पुल्स के लिए, बिल्कुल जब डेड हो ना गेम, मतलब Have quite the ego then. मैंने शायद लास्ट ग्लिटर Yeah, खर्च किया था well, काजुआ she के can लिए। be also quite eccentric, though she's काजुआ one मेरा of the जाके most निकला था around. 82 या Even the 84 Masters पे, of the Night Wind often struggle to work with her. मतलब 80 My पे भी नहीं guess मिला, is that she- इसलिए मैं But थोड़ा let's go to the stadium and see if सेफर we can साइड meet पे her there. खेलता हूँ कि If 80 we तक do पहुँच get a जाऊँगा। chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Let's go. यहाँ का म्यूजिक बड़ा अच्छा है यार। प्लस इस बार के 4 स्टार भी अच्छे नहीं है, तो मैं तो चाहता हूँ जल्दी मिल जाए, तो वेस्ट नहीं होगा पुल, क्योंकि कैंडिस, कॉली और डोरी तो किसी Paimon काम doesn't के नहीं see है। anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? Well, we मैं tried तो to be स्किप as करने का considerate भी as we सोच रहा था, could, लेकिन but she's under no obligation to help. वैसे मैं स्किप भी कर सकता हूँ, That might be true, but this is still a लेकिन request from the रीरन Pyro Archon, right? पता नहीं Shouldn't हाँ the कब subject आएगा। always- A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. नेक्स्ट Yes, कौन आ रहा है, Malika is कोई our leader, आइडिया but है? that doesn't mean there's any kind of tall आगे barrier कौन कौन आ between रहा है? us and her. अभी तो ये है, और दूसरा कौन है? चियोरी। The only वो thing is चियोरी that तो she चाहिए नहीं। often has very high expectations of us. आगे का कुछ So है even though क्लू? she's super क्या आ रहा powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy to get along with. Unlike that old hag Granny Eatstily, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? You all talk about her like she's some kind of ये huge कौन आ गया? deal, but she didn't even bother to reply to our letter. If that's what aging does to you, Paimon never wants. Oh, really? So, that's how you see me? Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. Huh? See, Lolly. Wait, you're Seat Lolly? You're Granny Eatstily? Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley, not Granny. मेरा हूटा और सेकंड फेज, वो तो दोनों है मेरे पास। यू वांट चियोरी? नहीं नहीं नहीं, मेरे को चियोरी नहीं है, मेरे को शिलोने नहीं चाहिए। शिलोने नहीं लूंगा मैं, मेरा गारंटीड भी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब मैं स्किप कर You दूं, must लेकिन know this फिर trope from light आगे novels, और आगे surely. का भी कोई They आइडिया use है? it all the time. 5.2 The में young man who's actually the कौन कौन आ oldest रहे हैं? person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a चलो little इसकी kid. कम से कम ऑडियो तो है। Oh, wipe that look off your face. You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely... Did I forget to mention? She's called Granny, but she's actually pretty young. वाह, फिर ग्रैनी क्यों बोल रखा? Radish, welcome to the stream.
लिखे तो हो फार्मिंग फॉर चिल्ड्रन 5.2 चैस्का लिनी जोंगली न्यूविलेट चैस का 5 स्टार होने वाली है। अच्छा, मेरे को तो 4 स्टार वाइब्स आ रही थी। कह रहे हैं ओरोयन ये जो इलेक्ट्रो वाला बंदा आ रहा है ये 4 स्टार होने वाला है और काफी इसके लिए उनको वो भी मिल रहा है बैकलैश। It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? ये कौन सा एलिमेंट है इसका? वो नहीं दिख रहा विजन कहीं। Your case. Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's. क्रायो है ये भी। अच्छा, तो ये भी अगर अच्छी डीपीएस होगी तो मैं लूँगा क्योंकि क्रायो में डीपीएस ही काम आता है। I don't know if you have seen her skills. नहीं, मैं नहीं देखा अभी। रिलीज करने से पहले इतना अच्छा स्टोरी दिखा दोगे कैरेक्टर के अराउंड तो सब 5 स्टार का डिमांड करेंगे। It was my idea to सही invite you बात है। here, Seat Lolly. So if you're upset, you can just take it out on me. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If anything, I'm gonna feel awkward if we keep this going. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. Besides, just showing up is the most important part, but it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit काफी awkward to relatable। see that everyone else had arrived before me. अच्छा, जोंगली के अभी 2 बैनर बचे हैं बीच में, तो मेरे को जोंगली चाहिए तो सही। देखते हैं, मे बी मैं फिर इसके बाद शिलोनिन के बाद जोंगली के लिए सेव करने लगूंगा। दिमाग में तो मेरे यही आ रहा है, बाकी At देखते हैं। first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's इसका the भी whole story. डिजाइन तो ओवरऑल अच्छा है। Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. शिलोनिन के अटैक्स देख के मुझे लग रहा था या तो क्लेमोर या What's वो with that होगी expression? मेज, लेकिन ये Was she स्वॉर्ड निकली। feeling? When the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her, I wonder if the feeling is mutual. She seems to be pretty awkward herself. Everything she Keep does and everyone says for seems a जोंगली। little forced. नहीं, अब ये शिलोनिन आ गई है। जोंगली के लिए 2 बैनर है ना, 40 दिन है मेरे पास। 40 दिन में आई गेस मैं पिटी तक तो पहुंच ही जाऊंगा, फिर 50-50 की बात आ जाएगी। हर ओवरवर्ल्ड एक्सप्लोरेशन अलोन मेक्स हर अ गुड पुल फॉर मी। आई विल सेव फॉर चेस्का फॉर लेटर पार्ट ऑफ 5.x आफ्टर माविका भी आएगी। माविका तो अगर क्लेमोर हुई तो मेरा तो नमस्ते हो जाएगा पहले। क्लेमोर मेरे को अच्छे नहीं लगते इस गेम में। आफ्टर माविका शिटलाली जो भी, और फिर शिलोनिन। अच्छा, Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. Correct. The माविका इस situation क्लेमोर isn't से like तुम्हारा anything नमस्ते we've हो handled गया। before. Let me explain. सही में कितनी पावर हो, वो पावरफुल कितनी भी हो, जैसे आर्लेकिनो आई थी उसका I भी मेरे को see. ऐसे कुछ So Mawika has मतलब asked you ऐसे to forge an ancient name for an क्या बोलते हो outlander. उसे, खिंचाव नहीं हुआ Well, उसकी that would तरफ, be तो a मैंने ली first. नहीं। And you've also heard all about Auroron. और I अगर must say, he's always been a good kid. ओवरऑल अगर तीनों I में can't चॉइस see him दोगे ना, joining the जैसे fraternity of माविका his हो own गई, जैसे volition. पायरो के जो He सबसे must have बेस्ट been coerced डीपीएस है somehow. वो आई थिंक यही है, मतलब हुटाओ
आर्लेकिनो और ये माविका आएगी अभी। बाकी और कोई पायरो डीपीएस इतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। स्वॉर्ड या फिर पोलाम। हाँ, तो इनमें तो मैं हूताओ लूँगा, भले ही तीनों में से सबसे वीक हो वो, लेकिन मुझे ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट और वैसे हूताओ बढ़िया है। हाँ सही में। स्वॉर्ड में कौन सा डीपीएस आया है? एनपायरो, हाँ वही वही। मैं तो वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि मेरे को डीपीएस में ये मेज वेज अच्छे नहीं लगते। अगर डीपीएस है तो वो पोलाम या स्वॉर्ड होना चाहिए, मतलब फिजिकल क्लोज कॉम्बैट होना चाहिए। इसलिए मुझे न्यूविलेट नहीं पसंद आता, क्योंकि न्यूविलेट से आप बस वो 3 ऑर्ब जनरेट करो, अपना जेट स्प्रे ऑन करो और बस मारते हो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ओवर पावर्ड और वैसे दिखता है, क्या बोलते हैं उसे, बढ़िया चीज़। Yeah, that's what we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. क्या हो गया? Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds, O weary yet free soul. Even the most verdant leaf in the forest will pray for your happiness and safe passage. Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Shoo! है? That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. I hate sword. Isn't that kinda like having part of a ghost come back with you? It's nothing as हाँ serious वही as ना, वो that. पर्सनल ओपिनियन है। If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your mood. Well, in that case, better to get rid of them. It was nothing. आयाटो जो है हाइड्रो में वो डीपीएस है ना? Shilonen, let's follow your proposal. Once आई you've थिंक वो brought Auroron डीपीएस ही है back, जहाँ तक मेरे को The लगता Lord है। of the Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? something this important is beyond their jurisdiction. Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the lord of the entire Night Kingdom and all. Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. आयाटो पे क्या थॉट्स है? Just आयाटो listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. Can any of you get everything for me? आयाटो इज पावर क्रेप्ट। पावर क्रेप्ट का ये मतलब होता है ना कि मतलब उससे पावरफुल हाइड्रो एलिमेंट्स आ गए, या मतलब हाइड्रो डीपीएस आ गए, यही मतलब होता है ना पावर क्रेप्ट। I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local जैसे हूताओ vendors. को इसने कर दिया आर्लेकिनो वगैरह ने। Sounds good. Then we'll
अच्छा सीट ला ली. When I was doing this test, I actually thought I broke my headphones or something. I almost reinstalled my audio drivers and stuff. हाँ मैं भी हैरान हो गया. मैंने कहा कचीना वहाँ खड़े खड़े हाथ वाथ हिला रही है, कुछ बोल रही है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही. मैंने भी अपने हेडफोन चेक किए कि कहीं कोई मोड वोड तो नहीं छिड़ गया या स्विच ऑफ तो नहीं हो गए. सही में ये तो काफ़ी गलत चीज़ है. मतलब जिसको पता नहीं है वो तो पता चले हेडफोन फेंक देगा कि चल नहीं रहा है. दो आई वॉन्ट टू प्ले हिम वन टाइम. हाँ आयाटो का प्ले स्टाइल अच्छा लगता है मेरे को. एनीमे वाला है पूरा. मतलब वो गायब होते रहता है और छक 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 और सब खत्म. अच्छा पावर क्रेप के बारे में मैं सही बोलते हैं. ओनली प्ले वे हिम विद शांगलिंग. अरे तुम्हारे पास है? अभी भी चलाते हो उसको? Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please या be मुलानी careful doing वगैरह your और ये investigation. If you need any क्या है help, वो हाइड्रो just ड्रैगन confirm ने me. जगह ले ली. Yep, we'll be sure to play it safe. All right, now it's time for us to catch that brat and bring him back. Oh, I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroron's place to look for. He has always lived alone. And I found a broken jar in his house. There was also something off about his phlogiston aphids. ये जो Which ओरॉन आ I रहा है assume ये is because their keeper has been gone for quite some ओरोरॉन time. ओरोरॉन. हाँ ओरोरॉन जो है ये डीपीएस है या सपोर्ट है? And कुछ आइडिया है अभी interestingly तक? नहीं. enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezhnayan arms. Oh, sounds like the Fatui broke into his house and took him hostage. चैट. हाँ मैंने मन में पढ़ा. वो दिक्कत ही होगी. प्ले स्टाइल रिस्ट्रिक्टिव है उसका. But why वो would they धक्का पड़ kidnap जाता a है. यही kid who चीज़ है just ना. spends his days living in the country and raising मैंने मन में aphids? पढ़ी एक्चुअली He's ये only in चैट. his 20s. ये What would they स्ट्राइक want वाली with मैंने him? पढ़ी कि ही न्यू अबाउट द स्ट्राइक. सपोर्ट है. सपोर्ट है. अरे उसका वैसे डिज़ाइन और ओवरऑल फील तो ऐसे दिखाया था कि डीपीएस वाला है. That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their मैं मोदी attention. की तरह मन की बात नहीं सुन सकती. In any case, My bad, we'll my get to the bad. bottom of this once we manage to get him back here. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. But please. You can count on us. All right. अगर इन्होंने then प्रीमो let's का start चेक by करने heading किया to होता where ना तो मैं Aurora वेट was करता seen पूरी last. आरकॉन आने का. फिर मैं एक साथ करता सारी आरकॉन ताकि मैं भूल ना जाऊं. क्योंकि मेरे साथ बहुत दिक्कत है. मैं अगर एक चीज़ छोड़ता हूँ फिर बाद में उसको रीविज़िट करता हूँ ना तो मैं कभी कभार भूल जाता हूँ कि पहले क्या हुआ था. लेकिन ये तो चलो उतना वैसे ये तो मैंने खेला ही था तो ज़्यादा मैं भूला नहीं हूँ. लेकिन यूजुअली मैं भूल जाता हूँ. जैसे मैं शोज़ वगैरह भी देखता हूँ ना तो जैसे मैंने हफ्ता भर फिर देखा ही नहीं अगला एपिसोड तो मैं पुराना एपिसोड भूल जाता हूँ. मरता तो था कि मतलब ऐसा लगता है कि एक रन में देख लो. एक रन में कर लो जो भी करना है. फिर आगे फिर पूछो मत. This is the spot. An eyewitness claimed to have seen Auroron speaking to some Fatui soldiers. I don't know how much you're willing to believe me, but Auroron really is a good kid. I see no reason why he'd I'm convinced that what the witnesses saw was actually the Fatui coercing him. Or perhaps trying to extract however, I doubt anyone would believe me.
given there are no signs. Didn't Kanich say that she's a big name in that land? Feels kinda weird to see her so frustrated and helpless like... Auroron? Well, he was left at the side of the road as an infant, and the people of the tribe took him in. You could say that everyone had a hand in raising him. Most of the characters की harsh history रही है upbringing में. वैसे child है, so मैं कभी बोर नहीं होता उससे. चाइल्ड भी बड़ा यूनिक है वैसे. वो भी उसका भी रेडन की तरह ही है. रेडन पोलाम है लेकिन उसका सारा डैमेज अल्ट में आता है, और अल्ट में वो स्वॉर्ड निकाल लेती है. ऐसे ही वो चाइल्ड है, चाइल्ड ई स्किल में अपना वो निकाल लेता है, वो जो स्वॉर्ड्स हैं उसकी क्लोज रेंज वाली. उसका तो मैंने वो बात सुन के बड़ा अजीब लगा कि उसकी ई स्किल जितनी देर चलाते हो उतनी लेट रिफ्रेश होती है. वो सुन के तो मैं थोड़ा धक्का सा लग गया कि भाई अगर 10 सेकंड चलाई तो शायद 15 सेकंड या 20 सेकंड हो जाता है ना उसका. 30 सेकंड का भी कूल डाउन मैंने देखा है चाइल्ड पे शायद. इग्नेट ओनली कैरेक्टर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ बर्स्ट एनिमेशन. चाइल्ड की 2 बर्स्ट एनिमेशन है. He learned a lot from us. एक तो वो है And वो जो once he reached एक adulthood, he built himself a house out in the countryside. वो एक He स्लैश spends सा most of मारता his है days बड़ा growing डैमेज. vegetables and एक raising तो वो तो aphids, देखा है मैंने. दूसरा living क्या है off of what he harvests from the garden. जिसमें वो पूरा 360 टाइप करता है. एक तो वो है, दूसरा क्या है ये तो मेरे को नहीं पता था कि उसका एक और अल्ट है. He's always been such a good kid. He would even get his friends वो to क्या deliver ऐसे है whole क्या कि bags of सिर्फ fresh क्यू produce to दबाया my place. या फिर एक वो हो गया और दूसरा ये हुआ कि ई दबा के क्यू दबाया तो अलग टाइप का होता है, ऐसा है? Oh well, let's keep looking. He can answer all of our questions once we find him. He's been raising phlogiston aphids for a long time. अरे And since they स्पाइरल were भी है वैसे. disturbed, they secreted स्पाइरल a से भी special 400 type of प्रीमो निकाल phlogiston. सकते हैं We can अगर use मैं that substance to track स्लो his 12 कर movements. पाया तो. Let's follow the phlogiston trail. What trail? Oh, right. I forgot your eyes don't naturally perceive such things. Here, give. ये बार बार हाथ मांग लेती है यार. क्या दिखने लगेगा अब हमें? Huh? How about now? What do you see? Whoa, Paimon can see it now too! That's right. I used a spell to temporarily transfer a portion of my senses to you. Wow, you can even share your senses with us? It requires a very rare spell that most people aren't adept at. But don't worry, it's a cinch for me. Between the two of you, it seems the Traveler's senses are a bit stronger than Paimon's. हाँ, depend upon his stance, उसका burst animation रहता है, whether it's melee or ranged. Normal cooldown ranges from 6 to 36 और max is 45. E skill का ना When I यही held तो your hand just now, I वो could देख sense के that मेरे you've को got डर a लगा great कि भाई affinity अगर for इसको ज़्यादा देर phlogiston. चलाया तो You're दिक्कत कर देगा. extraordinarily gifted. Anyway, हाँ, second we'll समझ need to गया use our समझ vision गया. now to track down Auroron. Over here, this way! See, Lolly might say a lot of deep and confusing stuff, but this spell of hers is really something. What does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my best to match their speech patterns, but... Or perhaps I'm still not fashionable enough? But that can't be, right? Don't tell me they're still Huh? क्या हो गया? Was that?
अच्छा इन्हें भी वो सुनाई दिया थोड़ा सा। Now that I think about it, it's a good thing I found some helpers this time. Some things are. अरे यार ट्रैवलर की भी आवाज डाल दो यार, ये क्या बदतमीजी है यार, ट्रैवलर बस गर्दन हिलाते रहते हैं। मेरे पास इतना ज़्यादा मोरा है कि समझ ही नहीं आ रहा किसको बिल्ड करूं। ओनली 194। क्या 190 मोरा रह गया? अब आगे मिलियन मत जोड़ देना। Oh, they appear to be feeling quite confident. मेरा भी कम हो गया था काफ़ी। उसके बाद मैंने पिछले कितने शायद महीने भर से या बहुत टाइम से मैं सिर्फ मोरा के ले लाइन्स कर रहा हूँ, और अब जाके थोड़ा 18 मिलियन पे आया हूँ मैं। डेली मतलब ऑलमोस्ट डेली मैं Looks like there's a सारा big रीजन ship over there. उसी पे स्पेंड कर रहा हूँ। Let's go take a look. ओनली Yeah, भाई judging by खत्म हो गया Paimon's मोरा। experience as a guide, it definitely looks like people set up camp here. Wait. The phlogiston here is a bit odd. मेरा तो ऐसे खत्म हुआ, मेरे पास ये आ गया, क्या बोलते हैं, ताइनारी आ गया, आई थिंक येलान आ गया, और येलान आ गई, और एक और किसी को तो किया मैंने, शायद 4 स्टार किसी को 80 या 70 किया मैंने, आई थिंक शेवरूस। ये 3 लोगों को लेवल अप करने में भाई ख़त्म हो गया मेरा 3 मोड। और एक और बीच में लगता तो रहता ही है कि वेपन अपग्रेड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उसमें मेरा मोरा ख़त्म हो गया। मेरे पास था 11-12 मिलियन, ये 3-4 Let me see. लोगों को बनाने में मेरा सारा मोरा ख़त्म हो गया था झटके से। Paimon sees a small shape here. This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. Only someone from our tribe would recognize. We've got to find. Leaving such a subtle mark implies that he was trying to be if they notice us, we can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? I can't have him no, I've got to be careful. ग्रैंडसन एबिस कर लो, अब तो ऑटो एबिस हो जाता है। हाँ मेरा 9-10 तो हो गया है। ग्रैंडसन पायरो क्वेस्ट, सॉरी आर्कॉन क्वेस्ट इज 7 hours long if you don't stop। क्या 7 घंटे का है ये? भाई मैं तो सोच रहा हूँ ये 3-4 घंटे का होगा जैसे पिछली बार आया था। Time to go. 5-6 घंटे में पूरे 2-3 एक्ट निकल गए थे। ये एक एक्ट 7 घंटे का बना दिया इन्होंने, वाह भाई सही है। पूरी मतलब मूवी 2 मूवियाँ दिखा देंगे हमें, सही है। There are traces of people staying here too. 12 बजे तक हो जाएगा। Wait a second. The phlogiston around here is. I can also smell a mix of elements in the air. Kanich told us that you were super amazing. No wonder you can. It's about time that little brat said something nice. There are signs of judging from what's left on ये the जो भी scene. ब्रैकेट्स There में आ must रहा है have और been ये a मन में fight. सोच रही है, हमें भी But सुनाई दे रहा है ना। after that, the factions seem to have gone their separate ways. Both the phlogiston and the elemental traces in the air support that. Do you still remember the little mark we found before? Paimon's thinking. What? Sorry, I have been able to overpower them. Easily 5 to 6 जिस स्पीड से कर रहे हो 7 घंटे से कम नहीं लगेगा। I could see editing 7 to 7 थाला for a Given there are reason। 2 signals अरे leading यार from here, we should split इनका up भी as well. कितना लिया गया था भाई, थाला हर चीज में थाला for a reason।
उसने इतने रन मार दिए, I'll take उसका this टोटल आया direction 7 बाई। and देखा leave the थाला फॉर रीजन। ये देखो इतनी बॉलें खेली, उसका टोटल आया 7 ही, उसका थाला फॉर Auron, रीजन। what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but now I had to bring other people into this as well. And off she goes. Traveler, did you hear all of that as well? Once Seat Lolly left, बीच में that बहुत ज्यादा voice बढ़ went गया away था as ये। well. Paimon even tried calling her name inside Paimon's head, but there was no response. So you were thinking the same thing. Paimon also thought that if we could hear what she was thinking, then she could probably also hear what we were thinking in our heads. She did say that she was quite adept at this spell, and it doesn't sound like she's had any trouble with it in the past. Huh, maybe we're a special case and can hear her thoughts as a side effect. कैरी मिनाटी का न्यू वीडियो देखे? नहीं यार, मैं कैरी मिनाटी को देखना छोड़ दिया था काफ़ी। मतलब जब से वो महीना भर ले रहा था या 2 महीने ले रहा था ना अपलोड करने से, तब से मैंने छोड़ रखा है। भुवन भी, मैं दोनों ही छोड़ रखा है। दिस वेरी क्लियर चेक पॉइंट, सो यू कैन डू इट इन पार्ट्स, बट लेटर पार्ट्स आर बेस्ट डन इन वन शॉट। वही मैं भी, यही तो मेरा पॉइंट था बोलने का। सोचता मैं भी If ये you हूँ think कि एक about ही it, झटके में she's सब really कर got a दिया जाए, lively लेकिन अब inner 7 world. घंटे It paints quite a different चलो picture देखते from हैं Paimon's first impression of her. क्या होता है। अभी तक तो ठीक चल रहा है, अभी तक तो मेंटल भी ठीक है। बाद में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया तो बात चेंज हो जाएगी। Time to go. Paimon sees some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. तो जो पायमोन जबरदस्ती फालतू में बोलती रहती है। जा रहे हैं भाई, आईपीएल के टाइम बढ़ जाता। आज वीडियो आया है, पैरोडी विद मिस्टर बीस्ट। अच्छा, Did you मिस्टर find बीस्ट something? तक बातें पहुंच गई क्या? Huh. So we can't tell where Aurora and... That's weird. The phlogiston trail suddenly stops. But it can't have just evaporated into thin air. So, you can hear the sounds of the wind from beneath the earth. ये उसका ऑडियो था। ओ भाई, मेरे को लगा ट्रैवलर बोला। फिर ही वोंट गेट स्केयर्ड फॉर 7 hours ब्रो। कट सीन कोई आया नहीं है जब से, तो ओरॉन ही होगा। ओरो ओरो ओरोरॉन। इनके नाम इतने टफ क्यों है? थोड़ा बेसिक सा रख दो। वो भी जब फिर वो प्रोनंसी, ओ ये वो नाइट वाले जगह आ गए ना, नाइट किंगडम। ये आ गया ओरॉन, ओरोरॉन। I'm very sorry, but please do not move. I have no desire to hurt you. ये इतना I apologize that our ऊंचा first सा क्यों meeting लग रहा has है? to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. However, you're now in the Night Kingdom, a familiar domain to the masters of the Night Wind. भाई मैं तो ये था, मतलब थैंक यू कि मतलब इसकी आवाज़ है कम से कम। कैरी एड-ऑन्स टू हिज जॉनर टू रोस्ट एंड पैरोडी। अच्छा अच्छा, थोड़ा एक्शन कर लो एबिस इफ यू गेट बोर्ड। हाँ, गुड सजेशन। देखते हैं, अभी तो ठीक चल रहा है सब। Hello, traveler. I'm Auroron, ओ the one you've been भाई, searching for. ओ भाई, ओ भाई, ओवरऑल लुक तो गजब है यार इसका। और हाइट डिफरेंस देख के टॉल कैरेक्टर है। 4 स्टार होगा तो फ्री में मिल जाएगा, ये भी ठीक है। Ah, the Fatui's custody. I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. I'm afraid you've been brought here by a lie, like a false omen in the lingering. My friend and I only left those traces to lure you here.
Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible way for us to set up a meeting. ये वो आ गया है Greetings, traveler from afar. पटुई जिससे माविका ने लड़ाई करी Be careful with this traveler. His soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration to hold on to him. It was I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. भाई ऐसा लुक बनाओगे तो 5 स्टार डिमांड हो गई हाँ सही में जस्टिफाइड है ये तो और ऑन नॉट बीइंग होमवर्क टू ट्रैवल अरे भाई इससे ला के सामने खड़ा कर दिया I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues. Given the present situation in Natlan, I would like to sincerely request a formal meeting with you, in person. I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you, as well as why I mistrust Malwika, the Pyro Archon. ये भी यही I बोल रहा है believe there is little reason for you to blindly follow her plan. हम बस उई नहीं बोल रहे हम माविका बोल रहे हैं ये मावी का बोल रहे हैं ठीक है माविका ही ठीक है अपना If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. लेकिन But भाई remember, not a word of this to anyone. मतलब I would like to avoid any further conflict. भाई लेकिन ये वो तो है बढ़िया डिजाइन है इसका लेकिन देखा जाए तो ये थोड़ा थोड़ा विदरिंग वेव्स के वैसा ट्रैवलर जैसा नहीं लग रहा थोड़ा थोड़ा मतलब ऑब्वियसली ये स्कार्फ अलग है थोड़ा सा टैटूज वगैरह मतलब वहाँ से इंस्पिरेशन जैसा लग रहा है मेरे को तो तुम्हें क्या लगता है नहीं लग रहा जैसे विदरिंग वेव्स का जो मेन कैरेक्टर है वहाँ पे क्या नाम होता है उसका रुकी शायद रुकी हो जाए जहाँ तक मेरे को याद हो रहा है वैसा ही नहीं लग रहा है You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please help me keep this a secret. This is all to avoid dragging Granny into this conflict. Hey, what happened just now? You suddenly collapsed and stopped responding. रोवर हाँ रोवर सॉरी रुकी मेरे को लगा रोवर साइना साइनो का चाचा चचेरा भाई लग रहा है साइनो एंड रेडन का बेटा लग रहा है अरे ये होयो लैब में भी बहुत चलने लगा है वो लोग दो कैरेक्टर को लेके फिर दूसरे तीसरे कैरेक्टर को दिखा देते हैं जैसे शायद एक था उसमें कौन कौन था शायद एल्बीडो का देखा था मैंने उसमें कौन कौन था यार याद नहीं एक तो नाविका सॉरी नाविया थी उसमें और एक कौन था हाँ येलान और वो जोंगली येलान और जोंगली को प्लस करके आगे शिंगचो दिखाया हुआ था फीमेल रोवर इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कैरेक्टर्स राइवलिंग 5 स्टार्स अच्छा अब तो मैं भूल गया हूँ देखना Hey, पड़ेगा मेरे को why are you sitting on the ground? Are you okay? अब इसको तो हम बता नहीं सकते See Lolly! He froze for a moment and then just collapsed to the ground. Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I known you were feeling unwell, ये बड़ा If you उसमें feel रहते हैं sick, हम you should just पूरे say टाइम so.
See, आर्कॉन the में ship मोस्टली able मैंने to, देखा है हम इसी में रहते हैं कि अच्छा हम बता दें, अगर हम exercise बता any देंगे तो ghosts वो or weird दिक्कत हो stuff जाएगी, that you picked up in the बता Night भी नहीं Kingdom? सकते, फिर बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो मतलब खुद ही घुटना पड़ता है। A seasoned traveler must know the importance of not pushing yourself beyond your limit. If you need anything from me, in any case, let ये लान प्लस वो कौन है, जोंगली, उसका need देखा to था be मैंने, Feeling better yet, जोंगली Traveler? प्लस ये लान इक्वल छिंचो। All right, let's get ready. I ऐसे followed मैंने my एक दो phlogiston तीन देखे trail थे। earlier to a stronghold guarded by soldiers. I have a feeling that Auroron is probably being held inside. नाविया प्लस बेनेट, आई थिंक एल्बिडो, ऐसा कुछ था शायद। Oh, so it's close by. Then let's head over right नाविया away. प्लस बेनेट इक्वल एल्बिडो। Well, I recruited you to be my helper, which means we're in this together. Like the wind and the clouds. We either move as one or not at all. फिर भी लाइक मेरी बहन नहीं मिल रही और तुम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाते रहते हो। But ये if you तो want इसके to लिए make it बुरा up मेरे to को me, शुरुआत से ही लग रहा है, then just जहाँ be sure जाते to हैं वहाँ fight पे कुछ extra प्रॉब्लम hard हो when the जाती है। time comes. लेकिन बस अच्छी चीज़ ये है कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो जितना हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। वो जितना हम करके दे रहे हैं ना इनको, उस हिसाब से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कुछ भी नहीं है। लाइक इससे अच्छा तो कोई इन्फॉर्मेशन ही ना दो, ऐसे ही चलना है। Look over there. Huh? Paimon thinks she sees someone in the middle of the camp. That's Auroron. All right, we'll take the lead. मारना ही तो है, इन सबको मार देंगे अभी, आ जाओ। बी टीम भी मार देंगे। Hey, quit daydreaming. Don't you have work to do? I cannot see the... Without the sun, I cannot see the truth. You are currently blocking the light, so I must beseech you to move aside. Huh? Okay, Mr. Philosopher. That's enough. Wow. I'm going. तो चल हम भी Lala कर is देंगे। struggling to control her temper. Are you ready? On my ये हमें यूज Still करने trying to मिलेगी क्या? resist? नहीं। You've got no idea who you're up against. Let's go! The wind knows me. Here comes the catch. वो कहाँ गया फटुई? मुझे लगा हो गया था। Into the wind. Fallen leaves, adorn my night. Busted. Free. इसको कवर दे रहा है भाई, कोई बचा नहीं है तेरा। Auroron! Granny! Paimon knows she's called Granny Eats to Leave, but it's still kind of weird hearing some. And greetings to you too. Gramps? What did you just call him? Gramps? Is that not right? You're Granny's friend, are you not? You seem to be approximately the same age as her, so I figured. अरे हाँ you've यार, gotta ये be बिल्कुल Gramps. वैसा ही लग रहा है। अब तो पूरे फिगर में दिख रहा है तो ऐसा ही लग रहा How है, many times have I told रोवर you? It जैसा। doesn't work थोड़ा like सा that. फेस There are a lot of people डिफरेंस who है look और थोड़ा about the सा same age as कपड़ों me. में You फर्क है, can't go लेकिन around calling everyone Gramps or सिमिलर Granny. लग रहा है काफी मुझे तो। Wait. He's not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who look like an adult but are actually only 8. Oh, your words have pierced my heart like a thorned vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to... Why are you so upset? You can just. Of course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's due. And since the masters of the night wind raised me अगर ऐसा होता collectively, तो आना I करने basically से see पहले everyone मिलवा above a दिया certain होता। age as an elder I should look up to. ये बात थोड़ी मेरे को थोड़ी ही समझ आई।
Exactly. But if you keep that up, then everyone's going to be your senior. And do you think saying all of this is gonna save you from a scolding? Haven't I told you 100 times since you were a kid? Be wary of beasts prowling around, scammers looking for their next victim, and strange people who appear out of nowhere. Oh, so you do remember, and you just chose to ignore them. I always knew that living on your own was going to get you into trouble sooner or later. You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. You're just lucky we got here when we did. I'm sorry, Granny. I'll be more Next time? Oh, good one. You think there'll भाई be ये a तो next बहुत time गुस्सा आ after रही है। this? They didn't hurt you. No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain and made me draw a map of the ley line. Okay, now answer me honestly. Were you the one who helped the captain escape after his battle with the Pyro Archon? Yes. क्यों? So why did you do it? Because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd just come to you, Granny, and they'd already figured out a way to make you do their bidding. Hey, I'm no ordinary granny. Would they really dare to come after me? And उन्होंने बस you, बोल दिया और ये did मान the लिया। gods give you a brain हाँ, just for you to same not चीज़ use बोली it? इसने। Did Face you value. really believe everything they said at face value? Thankfully, the Pyro Archon only asked that we find the mysterious individual from the Masters of the Night Wind, and didn't slap your name on a wanted. Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there is still no need to preemptively panic. Have you forgotten the words that I've taught you? अब वो मज़ा नहीं आ रहा जैसे चाइल्ड स्टोरी में था, पूरी फटुई से एक्टिंग करवा डाला फॉर हिज ब्रदर। सुमेरु का आरानारा वर्ल्ड बस वो तो याद है मुझे, लेकिन उसका वो इससे क्या बात हुई कि अगर ऐसा होता तो आरानारा करने से पहले मिलवा दिया होता। ये दोनों पॉइंट में मतलब वो तो पता है मेरे को, आरानारा में और सुमेरु में हमें इंसाइट तो मिली। हम सुमेरु में नहीं, वो तो फाउंटेन का था। वो सुमेरु का पार्ट था, फाउंटेन का था, जब हम अलग ही रेल में मिले थे फिर वो शैटर हो गया था। आई थिंक वो सुमेरु का ही पार्ट था जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि फाउंटेन तो वाज ऑल अबाउट फाउंटेन। चलो तुम करते रहो स्टोरी फिगर आउट। I'm sorry. Forget it. We can submit the details of this camp and the defeated Fatui as evidence of your innocence. Let's clean this place up and get back to the city. Sounds good. You're... Yes, I grow a lot of fresh produce in my garden. I hope the Pyro Archon... Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro... Recite the 3 Huh? No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatui... How exactly did the masters rape? Oh, क्या भाई ये डम सा क्यों लग रहा है? इसका पूरा बिल्ड तो ऐसा बढ़िया सा बना रखा है, तो ये घटिया बात क्यों कर रहा है बिल्कुल बेवकूफों वाली? बिल्ड ऐसा बनाए कि सबको फाड़ देगा जो आएगा सामने, और फिर बातें ऐसी कर रहा है, कह रहा पायरो आर्कॉन के सामने आके 3 वार्निंग्स बोल दूंगा। So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for Lali's safety. that's right. I'm sorry. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe, could I ask you to petition the Pyro Archon for her forgiveness? We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached a decision. Will I need to... Technically, yes. But if Miss Lali is willing to serve as your guarantor, then we can release... Sure. I'd be happy to do that. I don't have any more time to waste here. Understood. Thank you very much. Mr. Auroron, please report back to the speaker's chamber as soon as you've received notice. I understand. Thank you. And thank you too. Well, at least you won't need to hide your face. Traveler, Paimon, thank you very much for your help. And once Auroron is settled, I'll go talk to Shilonen and... Oh, thank you! You scratch my back, I scratch yours. It's as good as done.
You can just go twiddle your thumbs or something while you wait for the good news. Come with me, Auroron. We've got to find you a place to stay. Goodbye, Gramps. We're finally done. All right, it's time to find some grub. Huh? What is it? अरे बता दिया Sorry. पाइमोन को just बता didn't दिया see इसने that coming. So you really saw him in the Night Kingdom? Oh, that Aurora. यार was ऑप्शन him होना too. चाहिए था इसका He sounded earnest enough just now. Paimon would have never guessed anything was happening. All that stuff about protecting Seat Lolly and being forced to help the Fatui, when he's actually been a willing accomplice all along. Yeah, you're right. Still, Paimon appreciates you telling her about this. Paimon we still have another whole day before... वोट योर चॉइस चॉइस दी कहाँ बता दिया तुझे तो चॉइस देते तो मैं तो नहीं बताता इसको रात के 8 बजे तक आ गए Stand with me. Weird. Paimon doesn't see anyone. What was that? Good evening. Nice to. It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. What are you... I'm terribly sorry. It's just a. And what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's backs. You're right. Granny tells me that too. Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? Well, I could. It's all clear. Over to you. Excellent. The fact that you showed up proves that I was right about your character. Yet, there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you. If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash. And that's a scenario that I'd very much like to avoid. I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable and once you've learned the truth that the Pyro Archon Malwika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlan. Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear? And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss? If any part of the plan goes awry, all of Natlan, even all of Tavat, will pay for. Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I told you she's had another emergency plan all along? The details of which she has chosen to keep hidden from. An emergency plan? Yes.
A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to wait until she comes to her senses. My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup plan, and all of Natlan will be lost to the abyss. We have to make the decision for her, here and now. Yeah, do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for the Tsaritsa clan? I knew you'd be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so, my desire to save Natlan remains unchanged. And now, I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we... Someone's here. Huh? The captain disappeared! Something is rapidly approaching. Yeah. Something? Bad news, chump. It's your granny. इसको भी पता लगी. When did you get... I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're... How dare you go behind our backs like this, Auroron? Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? You really think you can avoid a scolding just by I'm not trying to avoid anything. Oh! And now you're talking back. Well, go on then. I'm sorry, Granny. I feel so... You! That's it! Where are my tools? Wait, Lolly! Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. So, maybe just save the scolding for later, okay? Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. You're right, Traveler. Let's go. We can discuss this more back in the city. ये तो क्लासिक एग्जाम्पल हो गया कि बच्चा पढ़ रहा था तो पड़ोसी आगे बोले कि अरे 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 कोई बात नहीं. In all my years, I've never had a child cause me so much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Auroron. Use it! Why did you help the No answer? Think you're being smart? Then let me ask a different question. Really? Just use your brain for a second. What do you possibly stand to gain by helping the captain? Only endless trouble awaits you and everyone in the tribe. हाँ मतलब काफी वैसी You've तो है, always been a good overpowering. kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather we had a conversation instead of... Why is he staring at us all of a sudden? I'm sorry that you have to hear all this. Indeed. It's like going to visit a friend at his house, only to suddenly hear your friend berating a naughty Saurian. Well, that's an oddly specific analogy. Wait, did one of your friends really do that? Yes. And every time my friend scolded his Saurians, they would look at me the same way you're looking at me now. Helpless and embarrassed. Hopefully she comes after Mavika. Wait, but you're the one getting your head chewed off. Stop making this अभी about तक us. पुलिंग वाला तो नहीं हुआ है. देखते हैं. Indeed, you've got a point. Then please just hang in there for a little while longer. क्रायो तो है वैसे मुझे क्रायो You dare चाहिए. gossip between yourselves instead of listening to me? You...
भाई ये क्या Sorry, Granny. प्रॉब्लम है भाई इसकी Sorry, कुछ? Granny. Sorry, Granny. You know क्या what? ये पागल वागल तो Fine. नहीं है? I'm perfectly aware that everything I say goes in one ear and out the other. You're all grown up now, so why would you listen to an old hack? You say all the right things, but then you go and completely ignore me. Well, if that's how you're going to treat me, you can stop sending Aoife over to my place to deliver your stupid Who's Aoife? That's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so he must be no good. You kids get to a certain age and suddenly act like you know it all. There's nothing I can say to get through to you. Auroron, if you're still thinking about that so-called duty, then please, just forget about it. The ley lines did not fall to this state because of you. And we've long... Seems they've started talking about some kind of tribal history. I'm starting to get lost. That's not it, Granny. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I can say is I'm sorry. His voice. Auroron! Where have you gone? It sounds like he's Matlab? somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlan. So I've got to go. Get back here this instant! Auroron! What is this? Powder from plant spores? Is that the trick he used? What just happened? How was he able to suddenly get so far away like that? हमें कुछ पता नहीं चल रहा, ये लोग लड़ रहे हैं. Literally equal cute when man. Cryo carried me for 2 years, so I have a soft spot for it. क्रायो मेरे पास एक भी नहीं है. अगर ये DPS हुई, अच्छा एनिमेशन वगैरह हुआ, so far कैरेक्टर तो It's a अच्छा trick of है. his. If you grind spores into a powder and spray it in the air, it can be manipulated to create an illusion. He pulled it off flawlessly. He must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how he's been hunting. Little brat. That's it. The next time we... Whoa, that's a little extreme. But still, why does he feel like he needs to run from us? If his goal is also to protect Natlan, then can't we work... I'm sorry for interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able to hear them out, there's no guarantee you would have gained anything substantial. Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or later. We've got quite a long walk back to the city. Let's take our time. मेरे को तो आयाका भी काफी सही लगती है. आयाका भी बढ़िया. इतना तो चल के ही चले जाएंगे. भाई ये लान पे एक ग्लाइडर कितना एपिक लगता है ना. Do you two have some time? Feeling hungry? How about we get something... Oh, right. It's been a while since we last ate. Now that we... Then let's go. We can find somewhere to sit down and talk. Food and drink... Really? You're not... that's right. See, Lolly has gotten a lot quieter since Aurora ran away. He's right. We're seasoned adventurers, so we're... Hey, come on now. You won't even let me take you out for some food and drinks? I just wanted to are you sure? We can save you some... Mora is the least of my concerns. Besides, we're definitely due a meal after all the time we've spent together. Let me get this one. I might be an old hag, but I liked... Sure, that's fine with us, but... Paimon doesn't want you to be sick. Don't worry. I'm sure a juicy grilled steak will work wonders.
मेरा ये स्किल रेडी नहीं था इसलिए मैंने टीपी यूज किया. Huh. Do you see two people standing by the door? They look like spitting images of each other. अच्छा. But Paimon only sees one person there. Huh? How could that be? I guess my mind isn't as sharp as it used to be. Do you think she's drunk? There you go, miss. Oh my, it's not every day you get to see Granny Itzley here with some friends. Not to mention ones who've made a huge name for them. Oh, so you've heard of us? Of course I have. Aren't you the ones who saved Kachina and brought her back? No wonder you hit it off with Granny Sitlali. She wouldn't spend time with just anybody. Wait, so you call her Granny too? Well, given our ages, it'd probably be more accurate for me to call her my great-great-granny. She's one of the most famous people at the Masters of the Nightwind. Most days, hardly anyone even dares talk to her. Huh? Gossiping about me right in front of my face now, are you, Chonka? Oh, please, Granny, I wouldn't dare. I'm just beyond happy to see you bring over some new friends. After all... Alright, that's enough. Go on now. I'm sure the other customers would like to talk to you as well. There's no need to keep staring at me. I promise I'll keep my alcohol down and... Drunk Lali, yeah, अच्छा था. Seatlawi? Seatlawi? Who's that? You got some gall calling me by my first name. Let me guess. You... Are you still with us, Seatlawi? You're kinda... You chumps come around here, picking fights with me? Well, you know what happens next. You lose, and then run off home to tell everyone about how I'm this big scary bully. It's always this... I mean, come on! Monster? Me? Granny Seatlali, you're not... Exactly! And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Between meditation, advising the chief, and speaking with the Wyab, I actually have a pretty oh yeah. And I have to mentor all the new kids. Hey, new kid. Yeah, you. Don't play dumb. Didn't I teach you how to find phlogiston? You see? I know my stuff. I'm a good teacher. That's more like it. About dang time someone showed me a little respect. Yeah, Granny's a hard worker, all right. You can always rely on old Granny. ये तो भाई ये तो गजब है भाई. ये इसके हर तरीके के हमने पर्सनालिटी देख रहे हैं हम. Did she just fall asleep with her eyes open? Behind this pitch black curtain, a chapter of hatred reveals itself. Behind the smoke, the lingering She's meditating again. She does this whenever she's had a few too many drinks. Her mind's actually racing at this point. Is this another specialty of the Masters of the No, I'd say it's an ability that's unique to Sitlali herself. While she can easily pick up everyone else's skills and tricks. Warning, warning. Red, the color of danger, has now arisen within that pair of eyes. Huh? Traveler? Paimon? What's wrong? I'm gonna hurl.
hang on, just keep. Phew. Okay. You had Paimon worried. Paimon really thought you were about to barf. How embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. That's never happened. Are you feeling okay? Wanna take a quick walk? There's so. Why not? Of course you can. Just say. Please, Paimon. It's not as simple as you think. We've only known each other for a few days, right? What would you think of me if I were to start dumping all of my complaints on you after we've only just met? Oh, Paimon gets it. You're hoping that we wouldn't think less of you no matter what you're about. No, that wasn't my point at all! Seriously, don't you youngsters know anything about shame? I'm talking about shame! I've lived all these years and still can't get rid of it! Surely, you know the feeling too? अपनी गलतियों को लोग शेम में चेंज करते रहते हैं और फिर लेके बैठे रहते हैं उसको। Actually, about that. Huh? Tell me what? Yeah, this is as good a time as. This is so... It's okay, Sweet Lolly. You had every right to complain. I can't take it anymore! Why do these... Hearing me mumble under my breath is one thing, but hearing what I mumble in my own head? That's too... It's just like when you're rolling on the floor in your pajamas, but you forget to lock the door, and someone bursts in to deliver cabbages and sees... So that, It happens to people in general, okay? No. Doesn't matter if you're 200 years old or 1,000 years old. Everyone rolls around in their pajamas sometimes. I was just picking something generic. Take a walk with me. Looks like she's completely given up. Like those criminals who just confess everything and accept their fate. So she is around 200. वही, लेकिन फिर उसने 1000 भी बोला तो मेरे को लगा कि शायद ये अलग हो सकता है, पता नहीं। बट उसके फर्स्ट सेंटेंस से तो यही लगा कि वो 200 साल की है और फिर उसने वो 1000 वाला वो ऐसे एज ए कवर अप दिया उसने, ऐसा लगा मेरे को। दरवाजे में नहीं घुसना है, आगे बढ़ना है। इंटरेस्टिंग तो है वैसे, मतलब ऐसे बोरिंग तो नहीं है, बढ़िया चल रहा था। Right? Wow, it's beautiful. You're making me want to cry. Oh no, what do we do? I was an expression, okay? A figure of speech. I'm just... embarrassed. Here you are thanking me. Even at... Let's just have a casual conversation. Really? You don't seem like the kind of person... Well, I guess I used to be more of a stickler for the rule. And you're right. I don't I'm just an eccentric old hag to them. That story's been passed down so long. What? You're just a regular person? The kids of my tribe would have a heart attack if they heard you say that. Granny Eatsley is a powerful figure. Be careful around her. That's what they'd say. Well, you are powerful. Are they... Some are. Others are mad I always come out on top. A few decades like that. And people stop knowing how... What about you? Are you scared of me? We don't find you scary at all. That's because you're not from my tribe. You don't know how many I make people realize that no matter how hard they work, they'll never become a living legend like, not to brag or anything. Maybe it's hard to believe. We believe you. Shilonen has full faith in your abilities, and Auroran didn't seem scared of you. He thinks of you as his grand... Yes, but Aurora... Mawika already told you about her plan. And you've given so much help to Auroran and me. Auroran's not like other people.
as I mentioned, he was abandoned as a child. एक मिनट they have indeed fixed the pacing of the story in a major way. No more endless useless fetch quests, but there's still some dragging. हाँ हाँ ये मैं समझ गया था. आई थिंक ये तुमने पहले भी बोला था एक बार. वो बात मेरे को याद है अभी भी. अब तुमने री वापस से बोली तो मेरे को और वो. I can unhear the SS in her voice. I can't. The reason being, his soul is incomplete. The Masters of the Nightwind view this as a bad omen, capable of bringing about illness and misfortune. No one knows who his parents were. He was just left on a rock in the wilderness. It's a miracle he wasn't devoured by some wild beast. The Masters of the Nightwind believe they can see human souls. And in Auroron's हाँ अब यार incomplete तुमने soul, स्टेट कर दिया तो अब मेरे को भी they बड़ा saw a possibility for अजीब सा लग रहा Natlan. है. A possibility to turn Auroron into a अब उसी vessel पे for वो lost जा रहा है. souls. ध्यान उसी पे जा रहा है. The ceremony would allow lost souls to gather within Ah, him. Auroron क्यों would बोल then be दिया? sent to the Night Kingdom to return the souls to their rightful place, strengthening the ley lines and completing the Wait, that doesn't sound right. Now, you see the problem. When damage occurs to the Night Kingdom, the souls held within disperse and remain adrift, unable to find a way back to the ley lines. The ceremony can send back countless souls at once, which would benefit the Night Kingdom and the souls themselves. Of course, the vessel, Souls में तो जो Auroron, वाट लग रही है ना ऑडियो की. would be sacrificed in the process. I wasn't surprised Process the में chief भी. at the time came up with the plan. The ley lines were already in a terrible state. A suitable candidate for the ceremony appears, and now you have the chance to make things better. Of course you're going to take it. When the chief asked for my opinion, I didn't give my Did approval, record this over Discord? but I didn't object either. So they went ahead with the ceremony. It failed. लेकिन ये वाली And चीज Auroron तो आई escaped थिंक with his ट्यूनिंग life. मतलब ऑडियो की प्रोफाइल की ट्यूनिंग करके आई थिंक हट Pathetic, सकती थी isn't it? जहां By तक not मुझे लग रहा है. objecting, I ऑडियो का वैसे basically मेरे को gave ज़्यादा them the आइडिया नहीं है go-ahead. लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा Maybe ट्रेबल they वेबल didn't have छेड़ my के explicit ठीक हो approval, सकता था. but it's not like I did the right thing. If the ceremony was successful, Auroron would probably be dead. Of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But what kind of message would we be sending by sentencing a newborn to death? By using a human life as a tool? It's not right. So, when I learned the ceremony had failed, I was ashamed by my inaction, and absolutely relieved by the result. The plan was never a secret. Or, I guess I should say, there was no point to keeping it a secret. A simple investigation from Auroron would reveal everything. Everyone thought he would be happy he survived. And he never really said anything to the contrary. But just as I was about to put all of it, he asks this question. Would Natlan have been saved if the... Wait, but... He knows that, but he still feels guilty. Auroron अच्छा has a तभी ये strong उनके ability साथ to कोलूड perceive कर रहा souls, है. more than any of us. Maybe he chose to work with the Fatui because he still thinks he owes a debt to Natlan. Traveler, didn't the captain say he found a way to solve the crisis? Maybe that's what... Anyway, we can't just let things go on like this. We have to convince him to come back. You don't look so good, Sweet Lolly. Maybe you should head back and get some... Probably drank too much. Okay, forget that. I need to go home. I hit a... You've helped me so much already. How do I... Hey, we're friends, aren't we? Besides, you already said you owe us a favor. Good point. Well... Bye.
Good night. Friends. I like the sound of that. Auroran's probably back with the captain, don't you think? You mean about the backup plan? Do you really believe what the captain told us? Yeah, you're right, but she's probably... हाँ कब मिलेगा ये? Must be some way related to the voice actor strike. That's why I changed to Japanese in the later part. I'm going to EB. Shaking. I'm going to EB. English. EB क्या है ये? I'm going to be. हाँ अच्छा. Sing to Japanese for some time. Next batch Ian might be even worse. Even the event, Sub-Zero Festival. I don't expect anyone to have a voice outside of Naida and Paimon. अभी तो मैंने देखा ही नहीं है उनमें कौन कौन है. There's a lot left. लेकिन यार पता है वो सबटाइटल फिर पढ़ने पड़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा. इंग्लिश ही रखना पड़ेगा मेरे को तो. अरे मैं यहाँ से क्या देखना चाह रहा हूँ? हाँ ये रथ मिलेगा हमें. रथ मेरे को तो ये देख के बड़ा मतलब ऐसे अच्छा सा लगता है कि जैसे ये जो चंक्स है ना एलिमेंट वाले. हाँ ये चंक्स सारे उस पे हैं. इंडियन उस पे है रिलीजन पे मतलब हिंदुइज्म पे. जैसे अग्नि हो गई. ये वरुणा का हो गया कुछ. आई थिंक ये मोस्टली इंडियन उस पे ही है. ये वाडा तो पक्का है. वायु भी है. पृथ्वी का पृथ्वा भी है. आई विल स्टार्ट लेटर. यस संस्कृत. हाँ वही ये देख के मेरे को थोड़ा ऐसा अच्छा लगता है कि क्या सही चीज़ है. मतलब गेम में भी रिप्रेजेंटेशन है. इधर से होता था ना एंट्री. Outside. Pirates still have his leave. Well, guess we should see what's going on. I finally got some time, so I got You're already here. and then I completed the was duelist just challenge. about to come get you. Wow, you're up early. That's impressive. मतलब तुमने Especially after all the achievements में drinking duelist last वाले night. सारे कर लिए वो चीज़. Let's not bring up last night. Anyway, I was also woken up by the commotion. Looks, I heard many areas of... The abyss attack. I'll be fine. We also have the support of the war. The stadium could always use more manpower. So I'm done making I was the one who vouched for him. So I need to report back to the speaker's chamber. But I should be able to convince them to let me go back to my tribe. As for the ancient name, once we handle this crisis, I'll talk to Shilonen right away. Don't worry, thank you. She left duelist early. यही वाला ना कि Situation जो isn't really serious, achievement but- वाली लिस्ट में है शायद वही वाला ना या कुछ और. duelist challenge क्या है? कुछ मेरे को पता नहीं है वो.
completed them quickly. I had done the ones that need a daily reset. Yeah, local legends. Duelist वाला का है. Challenger series. Elemental marksman. Challenger. Duelist वाला का है. Real meeting victors. Inazuma, Light of the Day, Chasm Lighter. ये अच्छा. ओ ये सब क्या है? चलो. अच्छा ये वो है जो मिलियन बॉसेस वाले हैं. मिलियन एचपी वाले जो बॉसेस हैं. अच्छा वही है ना ये. मैंने शायद एक को भी नहीं हराया. लॉल. Probably the hardest, at least for me, last one. ये तो भाई अभी यहाँ तक तो पहुँचने में टाइम है. बाहर निकलना है ना अब. मुलानी चास्का और ये भी कोई इलेक्ट्रो वाली है. और ये वो उसकी बहन है. Outlander has appeared. Oh, you're all here! But, what's with the whole stuff? Just my way of saying how awesome you are. We've got a real emergency on our hands. Alright, but can we— The Abyss suddenly attacked the Collective of Plenty, the Masters of the Nightwind, the Children of... Yes, and the attacks are increasing. The tribes उसने have ले plenty लाइन of की लोकेशन defenses, रिवील so कर दी they're ना safe तो for now. they But might I be able can't to say the abuse same that. for the adventurers and merchants stuck in the wild. Chaska and I have been searching for survivors and treating the wounded. We just got back. I plan on heading back to the Collective of Plenty. What about you, Mulalani? Where are you gonna go? I'll go help the Children of Echoes. What about you guys? We could go together. Yeah, that does sound important. No worries. Who knows? That would be pretty great, actually. It'll be fine. Your tribe doesn't do all that bodybuilding for Let's part ways here for now. And most importantly, be careful, everyone. Oh, and some of us need to avoid getting contaminated by dangerous-looking substances. Koichi, do we really have to do... It's alright. Alright, let's hurry up and talk to the pyro— पाइमोन बिल्कुल आंटी की तरह नहीं लगती. वो जो एक आंटी पीछे से बोलती रहती कुछ कुछ. Ian Sun was released 4 years ago. हाँ वो मैंने देखा. उसके ट्रेलर में था वो इलेक्ट्रो वाली. Oh, it's you two. As you can see, things are not looking good right now. People across Natlin are in danger. Look, I'm very interested in your recent adventures, but this is not a good time. That's alright, we're also in a hurry. We're gonna go help the Children of Echoes after this. What? So he thinks my plan is too risky. He thinks I'm being stubborn. I shouldn't underestimate the Fatui's ability to gather intelligence. The Gnosis does have that function. But I will answer you honestly, but you must help me keep this as I can use the power of the Gnosis to save Natlan. The Gnosis would drain all the souls and memories from the Night Kingdom and weave them into a giant net, which would surround the ley lines and protect them against abyssal corruption. Wait, you can use souls to weave a net? But... Yes. It means sacrificing those souls in the process. Souls are just another form of life. The cruelty of Paimon this isn't method that is annoying anymore, self-evident. thankfully. हाँ कम है मतलब comparatively पहले से तो. The Night Kingdom not only houses the souls of the dead, but also our memories and legends. Using the Gnosis means converting all three into material for the net. Even then, the net can still become corroded. If we cannot find a way to repair the damaged ley lines before that happens, then given the enormity of the price, it's a solution I refuse to consider right now. I want us to win, but I also care about how we win, and what that means for us. Now it's true.
Both plans come at a risk, but after weighing our options, this is our best bet. Natlan is unique among the nations of Teyvat. Given the ever-looming threat of the Abyss, the Pyro Archons had to account for the worst-case scenario. Having a contingency plan is our duty, not just to the people of Natlan, but to all who live on this continent. Still, this has always been a well-kept secret. I'm very curious how the captain learned that— Oh, one more thing? The captain said he found another way to solve the problem. Could be equally as extreme, though. Without the Gnosis, he should have no other option. But I see no reason for him to lie. Seems like our only path forward is to track 2 him घंटे down, हो गए so हमें he खेलते can हुए. answer that question for us. Judging by your expression, you must have doubted me, even if just for a second. Not even a little! We would never— Wait, what are you talking about? Just as expected. Maybe it was out of caution, anxiety, or simple curiosity, but know this. No matter what, our goal remains the same. We both want to save the people of this land. So now that you have your answer, do you still doubt me? You scared, Paimon. You've really got a lot of guts, Traveler. That's a good thing. Oh, and feel free to call me Mawika. It's what all my friends call me, and I like it that way. As for the captain, the intelligence officers we assigned to the Fatui should be back soon. That's great! Sounds like we just have to wait a little longer. Not just yet. Even though the Abyss is attacking several locations at once, don't worry. I just need to finish coordinating our available manpower, then I'll take a small team to handle the difficult locations. Damn, there's an evacuation notice active in my area for people who aren't sheltered. Cyclonic winds of 120 plus kilometers are incoming. कहाँ रहते हो भाई तुम? कहाँ की बात चल रही है? $120 plus kilometers? कहाँ हो रहा है ये? Wait, you're going to fight in person? Didn't you give up your power? अच्छा. That's true. I'm You far live in less powerful Bangalore. than a god in my current state. But don't forget, I was an experienced and ये तो powerful काफी warrior threatening सा before लग I रहा है ever मतलब. became the Pyro Archon. Hopefully No ज़्यादा कुछ matter हो how you ना. look at it, my duty is on the front lines. I just think there's strength in numbers. If the people feel emboldened, that's just a bonus. Anyway, even if we respond to these threats in time, it's not a permanent solution in the long run. I've considered moving my people to other nations, but given their close connection to the Night Kingdom, a forced evacuation would have devastating consequences. I've told the chiefs of each tribe to strengthen their defenses and advise people against leaving their settlement. Now, I just need to find the right time to disclose the true nature of the crisis to the people of Natlan. Paimon's a little worried about how people will react. Yes, but that won't be the only response. Alright, we should head out. Maybe we can join up with Milani. She can't be too far ahead. No need to worry about me. अरे यार थोड़ा ना रेज़न स्पेंड करते हैं पहले रुको. बहुत देर से हम यही सब कर रहे हैं. I think Chevrolet's का तो सेट ठीक है तो. I've never been in a cyclone before, at least I don't remember. I was an infant when the infamous 1999 cyclone made landfall. That was 250 plus. अरे बाप रे.
Good roll. सुन के ही डर सा लग रहा है भाई, पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ होगा उस टाइम। बाप रे। ISO प्लस हाई विंड्स, उफ। No, my sword! Ring cutter! The process of elimination. Out of my way! सिंगल रोटेशन में फेल दिया भाई। I'm more worried about my internet priorities. Shit. आज का स्टोरी हो गया या अभी मोटिवेट? अभी मोटिवेटेड, अभी है मोटिवेटेड, लेकिन अरे नाइट सोल वाले क्यों मिल रहे हैं? मेरे को दूसरा सेट चाहिए। अभी मैं थोड़ा रेजन स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि भरा हुआ रेजन देख के अच्छा नहीं लगता ना। आई थिंक तुम लोगों को लगता है ऐसा कि भरा हुआ नहीं रहना चाहिए रेजन। Time to act. Let me weave you a verse. No, my dissipate. Here you are. Deflect. Body and mouth. ये वाला रन काफी एपिक था। अबिस नहीं, अभी नहीं, अभी तो नहीं। ओह, काफी अच्छा सैंड मिल गया ये हमको। Everyone hold hands. Witness the power of Gua. Body and mind. The Temple of Wisdom. I see everything. Yeah. Flicker. I'll settle this. Everyone hold hands. I log in the morning, make my contents, and then farm at night. 160 keeps me awake. Thankfully, daily take less than 10 seconds now. हाँ। Radish अब 200 हो चुका है। अरे ओह, यही तो चाहिए था। सही है, डिफेंस ही चाहिए ना सब, इसमें नहीं है डिफेंस। Force of habit can't shake it off. सॉन्ग का कमांड नहीं है क्या? ऐसा टाइप नहीं। I got a full cracked set, but no, she doesn't. Make yourselves at home. Hey. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. ये तो अच्छा पीस था ना, मेरे को अभी आइडिया नहीं है ज़्यादा। अरे मैं वो करना भूल गया। Our bond is strong. Sorry अरे 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 for the trouble. I see everything. No, my sword. Ring cutter. ये ब्लूम ही मुझे मार देंगे, दिमाग खराब। रुक जाओ, पहले अब मैं सबको वीडी कर दूँ मन से। भाई एक भी वो ब्लूम पास में होता ना, वाट लग जानी थी वहाँ पर। हील कर लेते हैं सबको। Dissipate.
फ्लावर मिल तो गया तुमको। रखना चाहिए, सॉन्ग बजा सकते हैं। सॉन्ग रिक्वेस्ट का चलो मैं चेक करके डाल दूंगा। फ्लावर उसमें एचपी और अटैक था ना, उसमें वो कहाँ था डिफेंस? Share my knowledge. Hey, Rain outlines your fate. Body and not witness the power of Gugwa. Our bond is strong. Deflect. grow. Cookies weigh enough till C4 constellation. हाय एक भी ढंग का स्टार्ट नहीं है, इसमें भी नहीं है। कुकी C4 क्या है कुकी का? तो मेरे पास कितना C3 है। अच्छा, ये भी थोड़ा डैमेज बढ़ा देगा बीच बीच में। When Shinobu's HP drops below 25%, she will gain 150 elemental mastery. ओ भाई, अगर ये और स्टैक कर दिया जाए, बाप रे, तो हाइपर ब्लूम डैमेज तो भाई और बढ़ जाएगा। C3 is also good, C6 हाँ काम, मतलब उसको एक्टिवेट करना मुश्किल है ना, इसलिए ना। लेकिन उसका जो लिखा गया है वो चीज़ अच्छी है, मतलब पावरफुल तो है वो चीज़। कन्वर्ट। अट्ठाईस सर्कुलेट मिल गया। सैंड्स आई थिंक और कुछ नहीं मिला है, एक आधा प्लूम बूम मिल गया होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। चलो रेडियंट टीम में देखते हैं कैसे। शेवरूस के आर्टिफैक्ट भी अपग्रेड करने थे यार मैंने। 60 सेकेंड्स का कूल डाउन है C6 पे। आई मीन गांजा फूक पे C6 पे का है यार वो वाला। इसके में यार ये HP में रोल ही नहीं गया है इसका। और ये टेनासिटी ऑफ मिल लेती है पूरा क्रिट पे भेज दिया। ER भी है वैसे इसमें। HP सैंड है इसका, ये भी है। इसमें रोल कहाँ गया है अभी तक? एक क्रिट में गया है, हमें ER वगैरह चाहिए ज़्यादा। ठीक है, फ्लैट HP भी बढ़िया है, नो इश्यूज। ओके, एक और फ्लैट HP, बहुत ही बढ़िया। पोशन यूज कर लेते हैं क्योंकि हमने इसमें पोशन ही तो डाले हुए। 27 लगाते हैं पहले, क्या पता डबल मिल जाए। नहीं, 5 हो गया क्या? फिर इनको रहने देते हैं। 2x हो गया। दस क्रिट रेट। कितना HP हो गया? 36,000 पहुंच गए। आई डोंट हैव दिस फीमेल निक फ्यूरी।
36,000 पहुंच भी गया एचपी। अभी तो गॉबलेट में नहीं किया मैंने फुल। फ्लावर फुल है, फ्लावर भी फुल नहीं है अभी तो। यार इसमें एक आधा एचपी में चला जाता है यार। एक मिनट। इसमें तो सब डिफेंस में जा रहा है। इसको क्रिट स्टार्ट से कोई लेना देना नहीं है ना? भाई सब डिफेंस में क्या है। फोर सेट सॉन्ग्स का देना होता है। सॉन्ग्स का फोर सेट, सॉन्ग्स का फोर सेट क्या है? An active party member hits an opponent with a normal attack elemental burst. The damage level will be increased by 8% of total healing. This effect is removed after it has taken effect 5 times or after 10 seconds. अच्छा फोर्स सेट देना है क्या? ये क्या है ये? अरे वाह क्रिट डैमेज है तो मैं तो सोचा था टू पीस दे दूंगा। नहीं नहीं मेरा देखो बेनेट बिल्ड नोबलिस पे है पूरा। और ये तो इसका तो बस ई और क्यू और C6 है। इसको सॉन्ग्स ऑफ डेज पास देना है पूरा। इसका हीलिंग इफेक्ट करेगा ड्रास्टिकली इफ यू शिफ्ट फ्रॉम फोर्थ सेट। आई तो मैंने टेनेसिटी ऑफ मिलिट फालतू में किया है क्या? पॉइंट नहीं था इसका। HP ER अटैक ER EM ये नहीं करूँगा रोल। ER अटैक HP नहीं है उसमें। अटैक डिफेंस यही है एक ठीक ठाक सा। फोर्थ सेट होगा भी पहले, दो हो गए। अब एक मेरे को HP सर्कुलेट कहाँ से लाऊंगा मैं इसे? चलो रुको पहले इसको वो कर। टेनेसिटी जोंगली के काम आ जाएगा। Then songs and it is songs set. टैलेंट पे जाके डिटेल्स में देखो इसकी स्केलिंग अटैक है ना? स्केलिंग अटैक है इसका? किस चीज का अटैक है? अटैक कहीं दिख तो नहीं रहा मेरे को। Pretty sure it's HP hard cap at 40. अच्छा अभी वेपन में भी बचा है क्या? ओह आज मिलेगा क्या? नहीं आज नहीं। अच्छा अभी लेवल भी है। अगर 90 कर लिया तो फिर तो 40,000 आराम से पहुंच जाएगा। सॉन्ग्स ऑफ डेज पास्ट HP क्या है ये? फ्लैट HP क्रिट रेट यार चलो ये तो ठीक है। वैसे ये एक और है लेकिन इसमें फ्लैट HP नहीं है, उसमें 700 फ्लैट HP भी मिला है। इसमें भी डबल HP है और ER है। इसमें ER अटैक है। चलो इसमें डाल देते हैं। एक मिनट इसमें HP में रोल नहीं किया है ना? फिर डाल दो। ओह बहुत बढ़िया नाइस। ठीक है एक वेस्टफुल रोल गया इसमें।
नहीं डिफेंस नहीं, ईआर भी है। ओए बहुत बढ़िया। 5.2, हाँ 5.2 रोल ठीक है, लो नहीं है। ये खत्म हो गए भाई आर्टिफैक्ट को। कितना शेबरूस का एचपी कितना पहुंच गया? 35,000 है अभी। फोर्थ सेट नहीं है। तो देख Illusion shattered. Final warning. Everybody stand back. Inazuma shines eternal. Let's light it up. Stop right there. एक्चुअली मैं शार्लेट एंड शेवरूस में स्केलिंग का कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, माय बैड। शार्लेट अटैक स्केलिंग है। अच्छा 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 अच्छा, शार्लेट भी यार मेरे को चाहिए थी, शार्लेट है ही नहीं है मेरे पास, एक भी नहीं है। या इट्स वेरी इजी टू गेट द हार्ट कैप। शार्लेट को भी सॉन्ग चाहिए होता है। पीपल had old two sets for Charlotte, so it's better to use that. It's not recommended to farm this set. अच्छा, जब वो C6 हो तो सेट डिफरेंस पता लगता है। C6 शेवरूस रेयर जेम। I'm still setting at C0. ब्रोकन है भाई, मैंने जब इसका बफ पढ़ा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है रेडिन हाइपर कैरी में इसको ना रखने का। सैंड्स में एचपी नहीं, डिफेंस चाहिए हमें। इसमें तो कुछ मिल ही नहीं। You asked for it. Drop your weapons. Teamwork is dreamwork. No turning back. इस बार ये एक झटके में खत्म होने वाले हैं, Now you अगर shall क्लिक perish. लग गया तो। देखा, बोला था 20 सेकंड भाई। ओपी। और अभी तो सेट बोनस शुरू नहीं हुआ है और वो भी नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, हीलिंग बोनस क्यों मिला है? चलो लास्ट। Shine down. Stop right there. बन जाएगा तब तक। Hands where I can see 'em. I'm going in. अच्छा, कोई ये बता सकता है कि शेवरूस का ई स्किल करना कितना ज़रूरी है उसके लिए? To oblivion. मतलब अभी जैसे मैंने रोटेशन में वो नहीं किया ना, Final warning. ई स्किल नहीं किया था, तो ई स्किल कितना ज़रूरी है उसका? या ई स्किल ही मेन है? पता चले ई स्किल ही मेन है। सॉन्ग सेट डिफरेंस में शेन्यून पे बहुत ज़्यादा देखा है। सॉन्ग्स पे उसका स्केलिंग गोज एचपी सैंड्स बेकार, अटैक्स आती है बेकार। बहुत ज़रूरी है अटैक बफ विद स्किल। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। कभी थोड़ा डैमेज कम आया इस बार, तो आई थिंक मेरे को इसका ई ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए। मैं तो उसका ई ऐसे ही यूज़ कर देता हूँ। अरे यार, एक आध बार मैं वो कर लेता, सॉन्ग्स ऑफ डेज पास, क्या पता मेरे को एचपी कोई मिल जाता, गॉबलेट भी मिल जाता तो भी बात बन जाती।
नहीं यार, अभी फालतू में क्यों रोल करूं मैं? ऑफ सेट खेलता रहता हूँ मैं पूरे टाइम। नहीं खेलना मुझे ऑफ सेट। ऑफ सेट में बनाता रहता हूँ फिर। ये कब मिला मेरे को? ये अच्छा लॉग था ना? वही मैं सोचूं, मैंने कहा ये पीस लॉग नहीं है तो फिर क्या लॉग्ड होगा? हाँ, डिफेंस मिल गया है। एचपी डिफेंस नहीं, अटैक ईआर ईआर नहीं, अटैक डबल क्रिट एचपी डबल क्रिट अटैक डबल क्रिट एचपी डबल क्रिट। डोंट जज भाई, डोंट जज। डबल क्रिट मेरे को संभाल के रखने में थोड़ा वो अच्छा लगता है। सॉन्ग्स ऑफ डेज पास्ट का एचपी। अच्छा फ्लावर तो बढ़ा ले। इसमें एक रोल ईआर में है, एक डिफेंस में है। ठीक है अभी तक, नॉट बैड। कोई डबल रोल नहीं मिल रहा है। बेकार। हाय हाय, लास्ट के दो रोल कबाड़ा चले गए इसके। एक भी एचपी वगैरह में चला जाता तो बढ़िया हो जाता। कितना एचपी पहुंच गया? 36,000 पहुंच गया। 27 मोर डेज एंड माविका का पता लग जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉक्स रोल कर लो। क्रैश फास्टर, हाँ मैं करता हूँ भी। मैं तो नहीडा पे भी क्रिट दे रहा हूँ। पीएम मेन स्टैट्स मैं तो भाई बना दी बस, वही एम देख के। कमी मूव ऑन my part for not adding the newer artifacts to the strong box. मुझे यही रिडीम समझ में आया, तो बाकी पे ट्राई नहीं मारा। बजाते रहो भाई, कुछ भी बजाओ। कल तो सबने ऐसे मतलब 1-1.5 मिनट तक यही चल रहे थे साउंड अलर्ट्स। आई थिंक आइकरस था और वो ट्विस्टेड वोर्टेक्स, सब आके भाई सबने पूरा स्पैम कर दिया वो साउंड अलर्ट्स, एक के बाद एक बजते रहे वो। सॉन्ग्स ऑफ डेज पर स्ट्रॉन्ग बॉक्स करो यार एचपी के लिए। मेरे को स्ट्रॉन्ग अच्छा है भी नहीं वो सेट तो हमें और क्या चाहिए? इलेक्ट्रो गॉबलेट चाहिए तो सही, लेकिन सेट कौन सा चाहिए हमें? और सेट तो ऐसा सच है नहीं फिर। टाइनारी का हमारे पास क्या नहीं है? एक सेकंड, टाइनारी के लिए शायद मैं स्ट्रॉन्ग बॉक्स कर रहा। लेकिन ठीक है, मार तो ठीक मारता है ये। लेकिन वॉन्डर ट्रूप के लिए डबल डबल हो जाएगा तो मतलब वॉन्डर ट्रूप ढंग से अगर वो किया जाए। हाँ पहले चलो रेडन को मार लेते हैं चल के। रेजन 0 कर रहा हूँ मैं। सॉरी।
बेनेट का बिल्ड दिखाओ। एक सेकंड, अभी मैं इसमें जाके दिखाता हूँ। ये लो। Oh, ow! Where did that come from? HP 32,000 अटैक 799 जो मिलेगा, जिसमें से ER 220 वेपन ये मिल गया था स्टैंडर्ड बैनर से, तो बढ़िया था। फिर नोबलिस 4 पीस है, C6 N9। आर्टिफैक्ट के सब स्टैट्स भी दिखाऊंगा, मेन स्टैट्स। ये तो HP अटैक ही रहता है, ये HP है, HP हीलिंग बोनस। I was very lucky to get all these roles। देख रहे हो 16 HP किया है इसमें। ये तो चलो, और कुछ था नहीं तो ये दे दिया मैंने। वैसे इसमें अगर मैं ER और ले आऊँ तो और ER बढ़ जाएगा। फिर इसमें भी देखो HP में है और ER में रोल है, एक रोल बस अटैक में ख़राब हुआ है, बाकी 800 HP है। इसमें भी प्लूम में भी HP में और ER में रोल गए हैं, एक अटैक में गया। इसमें भी क्रिट डैमेज ER, इसमें डिफेंस में रोल गया, इसमें शायद 2 रोल ख़राब हुए। ठीक है, लेकिन चलता है। एक सेकेंड, कंपेयर करें एक मिनट। पीस दूसरे वाले में थोड़ी ज़्यादा है, ER इसमें ज़्यादा है, क्रिट डैमेज इसमें ज़्यादा है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। इसका ER बढ़ जाएगा। मोना डबल हाइड्रो में चलती तो इतना ER की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको। ठीक है, ये रोलेबल है, ये भी रोलेबल है, ये भी रोलेबल है। ठीक है, Benny's adventure team, assemble! एक सेकेंड, ER सैंड्स दे Benny's दे। adventure team, assemble! इसको और कितना ER चाहिए? 220 तो है, बहुत है। अब तो 233 हो गया। और मेरे को ER प्रॉब्लम नहीं होता वैसे, इसका ER आ जाता। Let's light it up! Stop right there! Quiver! Let's light it up! Justice will prevail! Inferior. Insolent. The eye sweeps the lands! Illusion shattered. Everybody stand back! Drop your weapons! Glory to the Shogun! Inazuma shines eternal. Lightning falls on the land of eternity. पूरा ही मार देता भाई मैं अभी। Stop right there! Adventure time! एक और बार बस वो आ जाए मेरा ना। Let's light it up! Shine down. This body is eternal. Teamwork is dreamwork! Hands where I can see 'em! Drop your weapons! Torn to oblivion. Purge all obstacles! तुम पता नहीं विश्वास करोगे नहीं करोगे, मैंने अपनी हाइपर ब्लूम टीम से वो किया है, इसको विकसित रूप में जाने से पहले मारा है। आय हाय, अरे वाह, ओ बाप रे, बिलेट भी मिला, ड्रीम सॉल्वेंट भी मिला और 2 ड्रॉप भी मिले। अच्छा था ये, मतलब रिवॉर्ड काफी स्टैक्ड रिवॉर्ड। 40 प्रीमो किस बात की मिले मेरे को?
ये बीच में 40 प्रीमो कहाँ से है? एक और पुल तो बन गया होगा नहीं? यार मैं कैसे रोका हुआ है ना अपने आप को, मैं ही जानता हूँ। एक सेकेंड, मेरा एग्जैक्ट 32,000 HP वाला बेनेट था, अब रीबिल्ड कर रहा हूँ विद ER HP हीलिंग बोनस से। क्यों लेके स्काईवर्ड ब्लेड The world remains constant over the centuries, but human देखा life is पर like the dew at dawn मैं दिल पे or a bubble बताऊँ। rising through water. तो Transitory. क्या लिख रहे हो भाई? ये वाला समझ नहीं आ रहा मेरे को। स्काईवर्ड ब्लेड दिखा पे मेरे दिल पे हथौड़ा मार दिया वो। स्काईवर्ड वर्ड ब्लेड दिखा के मेरे दिल पे हथौड़ा मार दिया। क्या तुम्हें मिला नहीं है अभी तक, या मतलब क्या सीन रहा है? मैंने एली फ्लैश दिया है। मैं वही काम नईडा नाविया न्यू विलेट से ऑलरेडी कर लिया। अरे बात बीपी से मिला होगा प्रीमो। बीपी से कैसे मिलेगा? बीपी में प्रीमो कहाँ मिल रहा है? बीपी में तो प्रीमो मिलता ही नहीं है। अच्छा ये करने से मिला है, एनहांस 5-स्टार आर्टिफैक्ट्स टू लेवल ऑफ। अच्छा ये करने से मिला है। ओह कर लो यार विश। अरे वो मेरा एक रूलिंग है स्ट्रिक्ट, आई डोंट हैव वन ईदर। अच्छा फिर तो मैं अपने आप को काफी लकी समझूंगा। भाई इस चेस्ट ने मेरा इतनी बार उल्लू बनाया ना, जब जब मैं इस डोमेन के आसपास से गुजरा हूँ, सोच के कि ये देखो इनजुमा में यहाँ पे चेस्ट नहीं ली मैंने, फिर इसको आगे क्लेम करो तो ये गाना बजाने वाला आ जाता है पैंडा। There is no escape. बट सिर्फ 20 मिलता है जो तुमको मिला नहीं अभी। अभी मेरे को 40 इसलिए मिला ना क्योंकि शायद उस पे वो है चेक पॉइंट्स है ना उसके। आई थिंक 30-60 पे एक होगा, फिर 100 पे एक होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है ऐसे ही होगा। अभी इसको भी कर दूंगा मैं। पिछले बोनस के तो शायद नहीं हुए होंगे फिर, क्योंकि मैंने आर्टिफैक्ट लेवल अप ही नहीं किया पिछले उसमें। बट सिर्फ 20 मिलता है। हाँ ये तो पढ़ लिया। एक का R2 ब्लेड देख के दिल में और दर्द हुआ। नहीं रिफाइन तो मैं कभी नहीं करूँगा 5-स्टार वेपन्स को। I am appreciative of the fact that I don't have one. I hope it stays that way. क्यों लेकिन ये तो अच्छा वेपन है, विद ER और अटैक स्पीड भी बढ़ाता है। अगर देखा जाए तो कोई ER स्केलिंग जैसे रेडिन का मेन ER वेपन है, तो अगर कोई ER डैमेज वाला हो तो उसका अगर स्पीड बढ़ जाए और क्रिट भी बढ़ जाए तो ये बढ़िया वेपन हो जाएगा उसके लिए। लेकिन आई थिंक अभी तक कोई ऐसा है नहीं जो ER से स्केलिंग है ना। चलो यार कौन करते हैं। रेजिन स्पेंड कर लिया हमने। भरा भरा रेजिन देख के अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार इधर भी चलते हैं, पता चले इसकी करेंसी चलना होगी। एंटी स्टैचू पे जाके विश करो, इतना मत रुको।
अरे मेरा This सेल्फ realm कंट्रोल अच्छा है भाई, मैं रुक जाता हूँ। If you ever यहाँ से ट्रांजिट ले this चुका हूँ realm मैं। is अरे हीरोज विट भी खरीद लेते हैं यार, कॉइन्स तो बहुत हैं। if you ever have चलो अब वापस से आर्कॉन पे चल। या मैं वो बीच में नहीं फंसना चाहता, दिक्कत ये है। आई वुड रादर कीप गेटिंग देयर डुप्लीकेट्स। Are you saying you have a C6 there? Illusion shattered. स्टैंडर्ड पे चीची, एटलस प्राइड वगैरह के दुख चल रहे हैं। चीची, अब मेरे को भी रिसेंटली चीची मिली। यहाँ पे पायरोकिलस छोड़ रखा है मैंने, इतना मुंह पे पायरोकिलस छोड़ रखा है मैंने। Quick, over here, to save. Kachina, how many people? अरे ये तो बोलेगी नहीं, There's a गूंगी है trapped बेचारी। caravan that needs our help. We'll go together. जा रहे। बताओ, यहाँ पे पायरोकिलस छूट रखा है मेरा। एक मिनट में वापस अपनी एक्सप्लोरेशन टीम ले लेता हूँ जो भाग सकती है। वुल्फ ग्रेवस्टोन, भाई इतना शॉर्ट मत लिखो यार। वुल्फ ग्रेवस्टोन को WGS लिख दिया। इतने डाइवर्स पुल में तुम मेरे से शॉर्ट में लिखोगे तो। Stay safe. We've got this. किनी चैन, अच्छा वो भी नहीं बोल सकते। ये क्या कर रही है यहाँ पे? अच्छा, सारे ट्रायल कलेक्टर्स दे दिए। All right, let the mountain's veins boil. वही तो पर्सनली इसका गेम प्ले कहाँ चली गई? उस पे एम करके मारा तो ये इधर कैसे मार रही है? पता है, मुझे शुरुआत में ही लगा था कि हो गया। I really thought I was done for. Wolf Gravestone is popular shorthand. I can't. Don't worry about it. We're just glad you're okay. Let's see. Your ठीक है goods भाई। look fine too. Guess the abyss isn't after Mora. That should be the last abyssal pylon near the Children of Echoes. अरे भाई, By the way, where's Seat Lolly? I thought she would come with you. मैं सोच रहा हूँ ऑडियो The कहाँ चली गई Masters of बीच the में। Nightwind also got attacked, so she went back to help her tribe. She said we can deal with the ancient name later. Yeah, that makes sense. The attacks are... Alright, this isn't a good place to talk. फिलोनिन का टॉर्सो बहुत छोटा नहीं है? बहुत ज्यादा ही छोटा लग रहा है देखने में। Looks like a few people were hurt after all. Oh. The Abyss threw a lot at us at once. Before long, Kachina brought over a whole group of warriors and...
You mean the situation in the Night Kingdom, right? Yeah, I feel the same way. It's impossible not to feel anxious when things are getting worse by the second, and... That just means we need to buy the Pyro Archon more time. You really are an eternal. Why, thank you. I guess it's one of my better qualities. इनके So, साथ भी शेयर कर दिया. specifics aside, the Pyro Archon confirmed the Gnosis can And somehow the captain finds out about it, goes to fight the Pyro Archon, and calls her out for honestly. We talked to Moika before we left the stadium. According to her, the cost of the captain's plane, and, well, it makes sense. If that was truly the better choice... Yeah, I trust the Pyro Archon. When I was upset about Kachina's disappearance, she was really sincere and patient with me. Plus, she burned down all those precious mementos for Kachina. She's already when it comes to Natlan's survival, there's no way she... I agree. Maybe the captain weighed ये the बातें costs तो मैं and came भूल to गया his own था. conclusion, but उसने फायर I'm को sure we have फ्यूल अप different करने के लिए priorities. अपनी वो सारे Life ornaments is वगैरह important, but so are डाल दिए history वो. and memory. Antiques. As the Archon, she can't ये tell मैं us भूल गया everything, था. but it seemed like she wasn't all... The next question is, if the captain found a new way to save Natlan... this is all... We still don't have enough information. Once we figure out what the Fatui are doing, we'll have our answer. Let's head back then. With how many Fatui there are, so... Sounds good. I have a... I was just about to ask. Registered? Nah. I'll just follow you around. You know, go where you go. You got it. I just don't want to make the trip back. All right. See you all later. Oh, you bet! कम से कम मुलानी की आवाज से. आर्टिफैक्ट्स तो मुझे लगता है नेवर एंडिंग टॉपिक है. आर्टिफैक्ट इस चीज में कभी वो नहीं खत्म नहीं होंगे. Moika! Oh, Chatska and Koichi are here! Wait, are you okay, Koichi? I'm fine. No need to worry. They ran into the Fatui while out on a mission and The Fatui? Calm down and let me explain. Here's what Watch out. It's the Fatui. You also gave up her powers for keeping the sacred flame burning. हाँ वो तो याद था. No. ये वाला याद भूल गया था मैं कि उसने It अपने looks like they're protecting. एंटीक्स वगैरह दिए हुए That's भी a traveling group फ्यूल from अप किए थे. Natlan. वो तो याद है मुझे जब वो Could they be trading for something? इसके बाल वाल ग्लो हो गए थे. कट सीन था Let's ना. keep observing for now. We're glad you're okay. Given the appearance of abyss monsters all over Natlan, you should cancel your journey and seek shelter at the stadium or what. Thank you so much. I wish there was something we... We don't expect anything in return. We were out on a mission and saw you being attacked. If you truly wish to repay the favor, you can keep this a secret. If anyone asks, just say you were... Oh, okay. We're not asking you to cover up our activities. We haven't done anything illegal. Our captain simply wishes to remain undisturbed. Nonetheless, the decision remains yours. If we wanted to keep you quiet, we would have employed a harsher... Got it. Did you hear that? They mentioned a cap. Exactly. Still, there was no trade. They were just helping people in need. I didn't believe the captain when he said he wanted to save Natlan. Maybe we've been wrong about the Fatui this अरे whole time. बहकावा भी होता है भैया. It's too हर early to चीज say. को ऐसे फेस वैल्यू पे Let's नहीं follow होती. them and see what's really going on. हाँ कोई नया चैट नहीं है तब से. मेरे को लगा जैसे कुछ नया चैट. So this is where they were headed. Looks tricky. It's heavily guarded on all sides. Koichi, wait for me here. Oh, no, you don't. How are you planning to get through all... Look, I can use this terrain to my advantage. With our tribe's special way of getting around, I doubt they'll see me come. We still can't see any... The more heavily guarded the location,
the more valuable the seat that intel is. Fine. That's even more risk. I'm confident I can protect myself. I can. You really believe that? Fine, don't believe me. But you can't honestly tell me infiltrating a heavily guarded Fatui hideout. You know, growing up, even if I insisted. All right, all right. If we start arguing, this will never end. Guess. All right, same plan as usual. Got your ropes? Yeah, let's go. अब हमें क्या ये वो करना पड़ेगा क्या? चैस का बन के मूव वगैरह करना पड़ेगा क्या हाइडन वे में? The Fatui have eyes all over this place. Now. It makes more sense now what she meant by I can't get around here easily. Exploration power. This is my chance. I'll wait for the next one. मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने कुछ मिस कर दिया, शायद मेरे को कुछ इनपुट देना था. Now. अबे यार ऐसे करवा यार, इससे अच्छा तो खुद ही करके दे देते भाई. ऐसे गो 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 क्लिक करना है. वाह. Not sure how many chances I'm gonna get. I need to act. Good. I made it without getting caught. I should get to that platform over there. But it's guarded by the Koichi should have line of sight. अरे यार ये बड़ा annoying है यार, ये जो ऐसे स्लो कर देते हैं ना स्टोरी को एकदम. That's it. Now's my chance. It's no use staying in one place. I should keep moving. Looks like Chaska is helping me by keeping an eye on the Fatui movements. I'll wait for her signal. Time to move. अरे यार ये बड़ा annoying हो रहा है. That was close. Almost got caught. Probably can't make it over in one go. I'll wait for my next chance. Now's my chance. ये पकड़ी जाने वाली है. I made it! That'll show my... Let's see... The Fatui's occupying all the best locations. If we could just get past them somehow... Wait! I've got it! Huh? What's that noise? Did something explode? What the heck is that? What do you think you're doing? I could ask you the same thing! Good, they're arguing. Looks like they just... The people on the hill over there left to help their comrade. Come get me, अरे Chaska! यार. I hope she gets this hand. That's Koichi's signal. Give me your hand, quick. Coming! I checked, and this way is completely clear.
भाई नॉर्मल मूवमेंट दे दो यार, ये मत कराओ। Well, I was pretty helpful, right? You know, everyone usually jumps at the chance to work with me. Not my own sister, though. No, she avoids me like her life depends on it. I was wrong, Koichi. Wait, you're just gonna admit it? Let's focus on the task at hand. All right. Looks like the Fatui are here to dig something up. I'm surprised they mobilized this many people. It seems like they're looking for a dragon relic called the source mech. The device is ancient. Barely any information survives to this day. And even people from Natland don't know how to use it. Not bad. Looks like it's in good shape. This should be what our Lord's looking for. Took us long enough. Come on, let's get this thing back. Back? Back where? Should we keep... You really want to keep going? Of course! We make a... What was this? Uh-oh. We've been... Falling rock incoming! Watch out for your gadget! What? अब तो हमें देंगे कंट्रोल या अब भी नहीं देंगे? Once we got them off our tail, अरे we went back to भाई, अब observe some बातों more. पे आ गई ये। They'd collected several identical pieces of something. It looked like they were waiting, though. So we decided to come back. So, Koichi got injured trying to get them off your tail? She pushed herself too hard and collapsed on the way back to the stadium. Well, I didn't cause you any trouble while we were fighting, right? So... You've done very well. I could make a comment on knowing your limits, but it's not my place. I know. I'm already reflecting on my So, our current intel suggests the Fatui is after the the device is a complete mystery, even to us. What does the captain want with it? I have no idea. But it's safe to... Shilonen, I need you to gather every scholar in Natland familiar with the secret source. I'll get... Thank you both for your hard work. I've prepared a small gift. My patience. You don't need to give us anything, Archon. We were just doing... Well, if Koichi doesn't want her favorite Saurus crackers, then... I accept. Thank you, Ark. What am I gonna do with you? There's some for the rest of you as well. They're one of my favorites too. I'll start investigating the source mechanism right away. I think अब बस कर लेना चाहिए हमें। स्पाइरल ट्राई करते चलो। अरे वाह 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 वाह, W की जगह Q दब। स्पाइरल में देखते हैं क्या सीन है। स्पाइरल में वैसे कितना टाइम है अभी? 23 दिन है। 23 दिन है तो फिर वेट करते हैं अभी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं हूताओ को चलाऊंगा थोड़ा। लेकिन फ्लोर 11 कर लेते हैं, चलो फ्लोर 11 कर लेते हैं बस, जो फेयरली इजी होना चाहिए। हाँ, उसके बाद ओवरवॉच या RL देखते हैं। ऊपर ठीक है, ऊपर हाइपर ब्लूम चल जाएगा। नीचे हम रेडिन वाली टीम ले लेते हैं, कैब्रूस और बंटी। बंटी बंटी Make yourselves at home. Rain cutter, know my sword. Quick lightning, terrified. Dissipate. Quick rain outlines your fate. Flicker. Stand with me. हो गया। ये लास्ट था, बस यही 4 लोग आए बस।
There is no escape. You asked for it. Stop right there. Everybody stand back. No turning back. Strike. Illusion shattered. Now you shall perish. हिट नहीं लगा. Shine down. Justice will prevail. Drop your weapons. Teamwork is dreamwork. Flash. Storm the front. मारने का मेरा मन नहीं है. मार देंगे इसको. Let's light it up. I see everything. Let me read you a verse. Now you're testing my the process of elimination. The Temple of Wisdom. Body and brain cutter. Brain outlines your fate. I'll settle this. Flicker. अरे मैंने एडा ही स्किल करना भूल गया. थोड़ा सा डैमेज कम आएगा. ठीक है, हो गया. Illusion shattered. You asked for it. Final warning. Everybody stand back. Quiver. They're gaining the upper hand. Glory to the Shogun. There is no escape. Torn to oblivion. Illusion shattered. Hands where I can see them. Stop right there. Teamwork is dreamwork. No turning back. Flash. Inazuma shines eternal. मुझे बस दोनों पे डैमेज चाहिए था, वो मेरा काम हो गया. Witness the power of Gua. Make yourselves at home. Committed to memory. Our bond is strong. Scatter. अभी बस यही दोनों लगाने वाले. Be gone. Transgressions. This body belongs to ice. छह फर्स्ट साइड है उसको. Shine down. Final warning. Everybody stand back. Justice will prevail. Storm the front. Illusion shattered. Let's light it up. खराब हो गया रोटेशन. Teamwork is dreamwork. Shine down. Now you shall perish. अरे मैं कूदो सारा का ही भी भूल गया भाई. एक बार रोटेशन खराब हो जाती है ना, वाट लग जाती है. Hands where I can see them. Drop your weapons. Glory to the Shogun. Quiver. Going in. बेनिडल्ट से मारा उसको. ठीक है, फ्लोर 12 करेंगे आराम से. फ्लोर 12 में माथा पच्ची हो जाती थोड़ी सी.
2 बुल और बन गए भाई। लेट्स गो। 64 हो गए हैं। बढ़िया। तो आई थिंक आर्कॉन और 1-2 दिन के कमीशन से हम 70 पे आ जाएंगे। और अगर हम इवेंट करने लगे तो आई थिंक और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ आर्कॉन भी शुरू हो गया क्या? ये कर सकते हैं अब? ये नहीं, अभी भी आर्कॉन ही करनी है। एक मिनट, एक्ट 4 मैं अभी एक्ट 3 पे हूँ भाई। बहुत टाइम लगेगा। Dodge this. What's the hurry? एक्ट 3 में और कितना बचा है अभी, कोई आइडिया? Freeze. एक्ट 3 अगर आज खत्म होगा और आधे 1 घंटे में क्या? एक्ट 3 खत्म हो सकता है क्या और आधे 1 घंटे में? I don't know about the act specifically. तो क्या टाइम हो रहा है? 3 घंटे हो गए। देखते हैं, चलो आधा घंटा और देखते हैं। अगर आधे घंटे में एक एक्ट हो जाता है तो फिर ठीक है। यहाँ से जाने का रास्ता होगा वहाँ? अच्छा हाँ, होता है होता है। एक पीछे एक गेट होता है। What's the hurry? देखते हैं, हाफ एन आवर और देखते हैं। I'm taking Koichi home. With our parents there to... Hey. That's what you always say. Everything's no big deal. What if the Abyss attacks again? You're saying if I let you rest in a hotel, you're not gonna rush out the minute you hear the alarm? I won't. Triple promise I won't. Mm-hmm. Fine. On the off chance something like that were to happen. But I'm a doctor. I have a duty to help people. I guess you're right. This reminds Paimon of when we first met. Except you were the one trying to stop Chaska. I'd do the same for anyone trying to put their life in danger. As a doctor, I don't want people to get... Then try to see things from my... The two of you are the same. I disagree. I understand. Who wants to be like her? Over... That's just not... Bye. Okay, don't get into another fight. Just pretend Paimon never... Don't worry, Paimon. You didn't do anything wrong. Arguing is just how we communicate. Neither of us really takes it. Plus, I guess we are similar in some ways. Maybe we're family. I can't help it if... Okay, you don't have to put it that... So, you're all good now? Neither of us are really the type to back down. So we'll always have our differences. Plus, I know you'll wake up one day and... Be my guest. See you later, Trav. There's no rush. At least grab a nice... Bye, you two. देखते हैं, आई थिंक अगर वो आ गया होगा वो फुल वाला रिवॉर्ड। फुल या क्या है वो? 60-40 प्रीमियम क्या मिलता है? आइकॉन करने से भी प्रीमियम मिलता है why do you look so awkward? Okay, I won't beat around the bush. Oh, and I'm sorry for interrupting your rest. I'll treat you to some charcoal grilled steak to make... Awesome! Just give it... Hey, friends don't order each other around. I'm just here to share some news. Remember what we talked about before? Oh yeah, you mentioned how Auroron has always wanted to save Natlan. And something about his soul being fragmented. Paimon and the Traveler discussed it after you left, and we think Auroron is probably back with the captive. I agree with your hypothesis. And Auroron came back. He helped the Masters of the Nightwind What? He came back? I told him to give up whatever he's doing, but he refused. He said they're just one step away from success, so there's no way he can back out now. I keep getting double crit and defense scroll sets. Double crit plus defense. Scroll sets क्या है ये? No Shilonin. And I need the other set down. अच्छा, गलत सेट मिल रहा है तुम्हें और Apparently, उसमें he भी came back to fulfill his duty वो to our वाले वो tribe. मिल रहे हैं When he डिफेंस विद डबल left, क्रिट। he said it was because he still has a duty to Natlan as a whole. I'm not surprised you let him go at all.
I had to prioritize my tribe. Besides, the situation was intense. I couldn't focus on outside and inside threats at the— Plus, he was on guard. He knew I would try to go after him, so he made sure to keep— all these years of calling me— Don't say that! Your tribe all raised him together, right? That couldn't have been easy. You're right. Seeing him come back reminded me of when he was little. Running around the tribe, dropping by random houses. He's not only a child of the Masters of the Nightwind, but a child of Natlan. It's only natural for a child to want to do something for the— Besides, Auroron is my apprentice. He might have a few tricks up his sleeve, but I guarantee I know every— Wait, what do you say? Look. Remember how I said Auroron's soul is fragmented? This is the talisman I created to keep it stable, and this gem is what makes the talisman work. It just so happens that Auroron is due for a gem replacement. Since I can't get close to him, I put the new gem in a supply bag and asked Aoife to bring it to him. You guys know Aoife, right? No? Well, he's a pretty famous vet around these parts. He's always bringing me all sorts of things, and he happened— Aoife doesn't know what's going on, so he agreed, no questions asked. Auroron would find the gem as soon as he opened the bag. He knows how important it is, so I knew he would make the switch. He probably suspected that I tampered with it. But here's the catch. The trick is on the bag. The moment he touched it, a portion of his memories were copied onto the old gem, which he no longer needs. That's amazing. You can do something like that? Most people can't. But I can't. That trick he used to bring you to the Night Kingdom isn't anything special, by the way. My technique is much more subtle. So in other words, we have a whole backup of Auroron's memories in this gem! The kid thinks he can take me on? Like I wasn't the one who taught him everything. That's amazing, Seat Lolly. Let's take a look right away! Once we get to the bottom of this, I know he thinks of me as his grandma. But do you think he'll get mad at me for this? You can be honest. Huh, that's a tough question. Paimon doesn't have a grandma, so she's not the best person to ask. To be honest, I've always doubted my ability to look after him. I didn't stop the ceremony all those years ago. But if I stop here, it will haunt me until I'm 500 years old. Every night I'll wake up in a fit of anger. I don't scare that easy. Still, if I back away from this and something happens to Auroron, I would never forget. I need to look at his memory. Even if he resents me, refuses to see me, or runs away for good, I don't care. And I won't blame him. A family does whatever it takes to protect their own. You sure you'll be okay? We can come with you if you want. Did you just say you'll come with me? Is that okay? We have a pretty good reason to see it too, don't we? Because, right, we need leads on the Fatui. You really mean it? Fine, you can come. Just promise me you'll see this through. No backing it. Don't worry, we're professional adventurers. Then I play. All right, time. You heard. Are you ready? इसके बाद ये जो पूरा सिनेरियो ये आई थिंक लास्ट पार्ट होगा एक्ट 3 का मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बाकी तो खेल के ही पता चलेगा Look how good you're doing. You'll grow into nice big radishes in the future. And you? Aoife says you're taking up too much space, but I think you're a good tree. What do you think? Hey! How's it going, Auroron? Good. How are you, Uncle? Can't complain. What you up to? Naming your vegetables again? You have to go and gather some emergency provisions in case all goes well in coming days. Good luck if you are pulling. No, I am not pulling, but good luck to you as well. Hopefully you'll stay safe. Good night. Thank you for joining. No, just some idle conversation. Sounds fascinating.
What did they... They told me you were coming and that you would take some produce with you. Ha! Only if you're offering. By the way, I ran into Aoife yesterday. He told me Chaska's fostering a Saurian at his place. No, don't worry. I'll find a way for him to make it up to me. I've already wrapped your share of the produce. Here you go. You really knew I was coming. That's pretty... Light up the smoke and you can see the path through the shadows. That's what everyone says. Hey, have you seen that strange group of people that just appeared out of... Appeared out of nowhere? I don't think so. It's the Fatui. Their leader seems like a big deal. He didn't bring many men with him, but they're all elite warriors. It seems like they're looking for someone. But I wouldn't go around asking too many questions. If you run into them... इसको आगा किया इसने अब You're from the Masters of the Nightwind, are you not? Why do you live here alone? I enjoy living by myself out in the wild. I guess you're from the Fatui. The one everyone's calling a big... Not an inaccurate description. I'm looking for someone who may be known to you. Sitalali is her name. Granny? What does an Outlander want with her? I've heard the name. You have business with her? There's no point to further questioning if you insist on hiding things from me. I shall seek answers elsewhere. Oh, he could tell I was lying and now he's leaving? He gave up just like that. Hey! At least tell me why you're looking for Sitalali. It's none of your concern. I have my own means of tracking her down. Why are the Fatui looking for her? What does she have to do with... I can't just let them go like this. I have to figure out what they're planning. अच्छा ये सीन है इसको हेल्प करने का बैक एंड पे he's gathering info as to why they're finding his granny. They've just been studying the ley lines and asking for leads on Granny. I can definitely rule out some sort of invasion. The situation has seen no true improvement. The Pyro Archon did not fulfill her My lord! Ignore him. He is no threat. He knows I'm following him, but he doesn't seem to care. He's strong, I can tell. But there's something unusual about him and also familiar in some way. What is it? My lord, I feel dizzy. A ley line disturbance. Certain presences have been forced to wander outside their rightful realm. That was a spell from the Masters of the Nightwind. How did he know that? Is he sending those escaped souls back into the ley lines? How did he do that so easily? Soulfaring is supposed to be extremely difficult. This could be related to why he... I feel much better. Thank you, my lord. Think nothing of it. Stay vigilant, and continue to gather information. The Abyss could attack at any moment. ये आने वाला है क्या ये playable character Assume होगा drill formation कोई and be idea prepared to fight. However, there's no reason to over-engage. Information is सुनने our में first तो आया मेरे priority. को कि ये playable होगा Yes, sir. Why are the Fatui fighting against the Abyss? Do they really mean us no harm? I've been following him this whole time and still they ignore me? It seems like his subordinates refer to him as... And now he's headed to the stadium. You two, with me. Everyone else, wait here as instructed. Send word to the other teams to retreat immediately if this fails. Yes, sir. He's going inside? But the Pyro Archon is in there. Forgive me, my lord. Allow me to check one more time. Do you truly wish... The time for idle observation is over. It now falls on me to act. This nation is out of time. Yes, sir. He just walked straight into the stadium. What is he gonna do? They're both incredibly strong. How long will they have to fight until someone comes out on top?
Wait, this feeling. Just like the other day near the ley lines, it's faint, like a soul's trying to escape. Where is it coming from? Is that why he's looking for Granny? If he dies here, then all clues will be lost. अच्छा इसलिए भी इसने बचाया इसको उसने. Curiosity. As for you, I must confess, I did not expect that little trick of yours to save the day. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into night. She could have dispelled it. She simply chose not to. You don't have much time. And you're injured on top of that. I'm beginning to see just how useful you heard something from here. No need to force yourself. I've never seen anyone match the Pyro Archon. I didn't expect you to intervene at such a critical moment. You know I've been following you. Why didn't you stop me? When walking in the forest, it is only natural to encounter wild beasts. However, not every beast has the courage to come out and bite. And yet, one of those very beasts saved your life. Then speak. What do you want? I didn't save you because I wanted something. My soul is more perceptive than others. I can sense that the ley lines are extremely weak. I don't know what the Pyro Archon is planning. The questions you asked her just now, well, I've had very similar doubts. There's no turning back for me now. What I did back there is going to get me in a lot of trouble. You attacked the Pyro Archon in broad daylight, and I used my spell to save you. A single glance. So, we're in the same boat. Seem to care little from... It's too late for that. Start from the beginning. Explain your relation to her first. I know you two are acquainted. It was obvious. See, Lali is my elder and my teacher. She taught me everything I know. It's my... If you truly wish to protect her, you should have let me perish at the Pyro Archon's hand. Yet, you chose otherwise. Do I really need to tell you what that means? I want to do something to change Natlan for the better. Something I can accomplish with my own two hands. You're stranger than anyone I've ever met. But maybe... Strange? Cisalali is said to be the legendary Granny Eastly. Someone capable of communicating with the Wyub. And the Wyub are the key to information. Why do you need knowledge on the Night King? That is not something you need. Don't forget, Do you not believe the Fatui capable of betraying a debt? People can lie, but souls cannot. I can tell there's a weight to your soul. You may not live among your tribe, but you certainly know their tricks. I apologize for my rash judgment. You are more... Let's go. We'll see if you have what it takes to join my... ये सारी सिनेरियोज हमें अब पता चल रही हैं उसके फ्रैगमेंट के थ्रू. ठीक है. I see. Interesting approach. Worth trying. Rather than weaving a net to protect the ley lines, this method would address the root problem by reconstructing the ley lines themselves. Traveler, Paimon. Paimon's fine, just... Of course. I'm just... After everything, he still can't let go of the past. For some reason, he thinks he owes something to the people who cared for him. Stubborn, self-righteous. Now that he's all grown up, he thinks no one can tell him what to do? He thinks he can just... I'll show him. If he tries to run one more time... Maybe stubbornness runs in the family. Like grandmother, like grandson. Is that supposed to be a Anyway, back to what we just saw. I don't even know what to make of it. Yeah, the captain seriously wants to reconstruct. What does that even mean? Something like the loom of fate, maybe? But how does that help with The loom of fate? Oh, anyway,
wants to manipulate the ley lines. Everyone in Natlan will be affected. Which means the captain has been honest from the very beginning. Why is he so obsessed with saving Natlan? Oh, we've got to tell Mo. Yes, she needs to. देखा, मैंने बोला था, मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी कि इसके बाद एक्ट खत्म हो जाएगा भाई। आई वाज श्योर। नाइस, एक और पुल मिल गया। $65, ओके नाइस। कुछ टाइम में। अरे यार, एक्ट 3 करने से हमें ये मिल जाएगा अब। ये अच्छा अभी भी करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, नाइस। बाउंटीज भी कर लेते हैं, फिर हम स्विच करते हैं। आरएल में ही चलते हैं अभी, ओवरवॉच खेलने का मन नहीं है। आई थिंक मैं रैंक नहीं खेलूँगा, बेसिक ही खेलेंगे, कैजुअल्स, जस्ट फॉर फन। Take it easy. टीम से होगा नहीं, रुक उनकी टीम ले लेते। पायरो से तो नहीं है ना कुछ चक्कर? प्रायो एनिमो रेजिस्टेंस इनवल्नरेबल टू पायरो। एक और कहाँ आया होगा? इनवल्नरेबल टू जियो। तो इसको मारने के बाद हम रेडियंट टीम ले आते हैं, उससे सारा हो जाएगा। Things are about to get dicey. Quietly now. Let me weave you a verse. Rain outlines. Go! Out of the way or get blown away. Stick around. Forget it. Busted. Ring cutter. Out of the way or get blown away. Here comes the catch. Gotcha. Adventure time. Let me weave you a verse. Body and mind. हैं? अल्टी हुई लेकिन वो मर गई कुछ भी। वे वो हील ले रहे हैं क्या पीछे से यार? Busted. क्या हो जाता है ये? Rain outlines your fate. Witness the power. Teamwork is dreamwork. Let's gotcha. Busted. Off we go. Let me weave you a verse.
Gang's up. Fun's over. Everybody stand back. Let's light it up. Quietly now. Ring cutter. No, my sword. Still. Stand down. I will नहीं, you should, buddy. Take it easy. हूता हो तो मर गई यार, यही प्रॉब्लम है हूता चलाने में ना। मैंने उसकी अल्टीमेट दबा दी थी लेकिन उसने करी भी एनिमेशन, घुमाया भी घोस्ट, लेकिन भाई क्या मतलब एनिमेशन के बीच में कैसे पड़ गई मेरे को समझ नहीं आया ये चीज़। इसको कैंसिल करो, नेविगेट ही करता रहेगा। There is no escape. Finish this fast. Here comes another. Justice will prevail. Final warning. Teamwork is dream work. Storm the front. Strike. Shine down. Turn to oblivion. ओए 7 लाख था वो। एक सेकेंड, एक मिनट में रिप्ले सेव कर लेता हूँ पहले। अच्छा उसकी पायरो रेजिस्टेंस डिक्रीज, मतलब इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस डिक्रीज थी इसलिए आया होगा वो नंबर। लेकिन ये काउंट होता है, 8 लाख था वो। बाप रे 8 लाख मार दिया रेडन ने, बाप। लेकिन वो इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस डिक्रीज पे था यार, गलत वो आ गया मेरा डैमेज। ऐसा डैमेज नहीं चाहिए था मेरे को यार। चलो बस आज के लिए टेंशन में हो गया काम, ऑल डन। एक एक्ट हमने खत्म कर लिया सक्सेसफुली। अब चलते हैं आरएल में। कंट्रोल ओवरले ऑन कर लिया, बस टाइटल चेंज करता हूँ मैं, कैटेगरी भी चेंज करूँगा। मैं 1 सेकंड में वापस आ रहा हूँ, बस 1 मिनट देना, तब तक गेम ऑन हो रही है।
Hey, I am back. Let's see. पॉलिसी अपडेट कहाँ से आ गया? अरे क्या था वो? न्यूज़ कैसे खुलती थी इससे? न्यूज़ मैच हिस्ट्री इज ट्रैक योर करियर इन रॉकेट लीग मैच हिस्ट्री इज अवेलेबल। कहाँ पे है ये मैच हिस्ट्री? मैच हिस्ट्री मेरा। अच्छा, अब उसमें बैकएंड में जाके रिप्ले सेव कर सकते हो? ओह, this is something new. Ryzen Bacchus mod working. बंद पड़ा है Bacchus mod, क्यों भाई? ऑन कीजिए। कर तो दिया लाइसेंस एग्रीमेंट। इस गेम के ड्रामे ही नहीं बनते। चली रही है गेम अभी तक? हम्म या अरे हाँ, गाने भी चला लेते हैं यार। आरएल में कैजुअल खेलते हुए तो म्यूजिक चाहिए। इससे अच्छा तो यार यू लगा लिया होता है। बाप रे, कैमरे पर ही रुकता है।
यू ही लगा लेता यार, कम से कम एक मिनट तो होता है मेरे पास। आ गया टीममेट। Since we were 16, we want the same things we do. Oi! Everybody wanna keep running. Everybody wanna keep go. Everybody wanna keep running. Everybody wanna take her out of the way. And the whole wide world find another way, 'cause she belongs to me. Everybody wanna take her out of it. Up a bit of the तो मार ही नहीं रहा। हेलो, टुडे मेरा नेट अच्छा चल रहा है। वार्मिंग अप नहीं, आज मैं देख रहा हूँ, अगर मेरे को ठीक लगा तो ही मैं कैजुअल खेल मतलब रैंक खेलूँगा। वैसे ऑन तो मैंने उसके लिए करी है, कैजुअल के लिए। काफी सीडी फ्लिक मारी।
म्यूजिक लाउड तो नहीं है ना? फिर मैं रह गया कोर्ट पे। नाइस। अ बिट लाउड। ठीक है, मैं इस गेम के बाद कम करता हूँ। वैसे तो कैजुअल है, अभी करता हूँ। थोड़ा मैंने घटाया, आई थिंक हो जाएगा उससे। तुम जो कैजुअल खेलना चाह रहे हो? कल तो मेरा बर्थडे। एनी प्लान्स? बॉटम कॉर्नर फाइंड कर रहा था लेकिन हुआ नहीं मेरे से, थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से। I know, it's sometimes I think about being just way too much. Plans, yes, plans. पर्सनली मैं तो अब सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, मैं बहुत टाइम हो गया। आई थिंक मुझे सेलिब्रेट करे हुए 6 to 7 ईयर्स तो हो गए। 15-16 के बाद से आई थिंक, उससे पहले भी मुझे कुछ खास ऐसे याद नहीं है। ओए नहीं यार, रिजल्ट फ्लिक। ओए आई थॉट इसके पास ब्लॉक था। Taking my time on my ride. Dominating, nice. Casual में तो क्या ही dominating. Hey. ज़्यादा एंगल रह नहीं गया था वहाँ से कुछ करने के लिए।
तब गए सिवाय मेरे taking my time on my ride. My casual MMR must be much. कॉम्पी तो नहीं किया ना मैंने must be much low पता नहीं वाओ नहीं join if I'm fine with casuals हाँ देख लो कर लो इस गेम के बाद इनवाइट करता हूँ ये क्या मैप के कॉर्नर से भी खींच लेता है क्या इसका गोल एक्सप्लोजन अच्छा मैं इनवाइट अभी करके रख देता हूँ DSSL ये कब हुआ एक सेकेंड रेज DSSL ओए थोड़े से रह गया कहीं मेरी रिकवरी तेल लगाने लगा इसने पास ही दिया मुझे अरे हम दोनों एक ही बूथ चले गए क्या वो भी 12 पैड ओए बढ़िया पढ़ता है ये मैं एक्चुअली चैट पढ़ने लग गया एयरकक्स इज अ जीसी इज माय फ्रेंड अच्छा जीसी है ये ओके
अरे यार remember me for centuries. अरे इसने पिंच खराब कर दिया We can't listen you because wearing headphones. अरे मैं पार्टी कैसे लीव कर गया एक सेकंड remember me centuries. नहीं ज्यादा कम नहीं है तुम्हारा कैजुअल है में 50-60 ही कम है 60 तो भी एग्जैक्ट अरे I missed the boost. इसमें कुछ था भी नहीं भाई मेरा तो oh they just left mid wide open पर लेट हो गया उनका वो
हाँ बूस्ट नहीं है। देख के ये जा कैसे रहा था उस बॉल पे? My bad, my bad. हाँ वेव डैश तक सब कुछ ठीक रहता है, फिर मैं खराब कर देता हूँ। अरे बहुत बढ़िया। भाई अरे 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 वेव डैश कब होगी? When you get older, you wanna live for younger days. Hi, hi. अरे वाह। मैं अपने टीममेट्स का बहुत ज़्यादा बूस्ट वेस्ट करा देता हूँ। वो कहाँ गया भाई? ये क्या था? अरे बाप रे, कहाँ जा रहा है वो? तेरा अरे हाँ क्या यू प्लेइंग सो गुड, व्हाई नॉट प्लेइंग कॉम्प्स? ऐसे ही अभी मन नहीं कर रहा। अरे मेरे को लगा वो क्लोज वाला पोस्ट छोड़ देगा। In my hand. ये क्या था? ये अच्छी पिंग आ रही है। योर इंटरनेट इज गुड व्हाइल यू गेटिंग 200 पिंग। ये क्या था? कॉम्प पे से खेल तो सकते हैं, ज्यादा क्या होगा, एमआर गिर जाएगी। फर्क तो कुछ पड़ना नहीं।
चलो इसके बाद फिर कॉम्प ही चलते हैं। अरे नाइस। ओह कैसे गई है अंदर। 139। Oof. Let's go. मेरे को तो लगा ये हमारे गोल में जाती सीधा। थोड़ी सी ऊंची होती तो। डायरेक्ट गोल। और देखते हैं। It's too cold. बम करने गोल के बाहर तक आ गया भाई। डेडिकेटेड था भाई। क्या रहा है ये? अरे बहुत ही खराब टच दिया मैंने। बच गया। सॉरी। मैं गोल भी पड़वा दूंगा। क्या हुआ भाई पिछले आधे मिनट में। अरे इसका टीममेट आ गया। पार्टी में है क्या लोग। डेमो हंगरी खेल रहे हैं लोग। हाँ वो पास बन जाता उसका। कुछ नहीं आया। अब आएगा और वो ले जाएगा बस। ड्रिफ्ट कर लेना चाहिए था मेरे को। Missed. गोल कैसे खा रहे हैं ये लोग। अभी तो ये लोग प्रेशर बिल्ड कर रहे थे। अरे वाह वाह क्या चक्कर है ये। बूस्ट का चक्कर बाबू भैया बूस्ट। अरे भाई नाइस शॉट। फुल कोट हो जाता।
स्पीड देखनी थी, मैंने गलती से स्किप कर दिया। मेरी स्क्रीन में वो बम्प हुआ लेकिन फिर वो नहीं हुआ बम्प, क्या था वो? दूसरा बंदा तो आराम से खेल रहा है, उसी को ज्यादा कीड़ा हुआ है। मेरे को लगा ये सीधे मार जाएगी। देखना पड़ेगा, मैंने बहुत गंदा क्लियर मारा सीधे उसके मुंह पे। आ रहा है वो। I'm on top of the world. Hey, time for the compound. देखते हैं फॉर्म में और ट्रायड वाले लोग आ जाते हैं ना, अभी तो कैजुअल में ठीक है, लोग एक बार को छोड़ भी देते हैं, फॉर्म में छोड़ते नहीं। I'm on top of the world. तो मैं रोक रहा हूँ ऑफेंस की जगह, तो डिफेंसिव पोजीशन में चला गया। अरे इसमें तो और खराब पिंग आएगी तुम्हारी। एसएम, कैन यू प्ले एसएम? नहीं बोल रहा। अरे कैसे ब्लॉक मिला इसको? अबे यार मैं गलत रीड कर दिया जो। हाँ गुड डक। 127 ये भी पिंच हो गई क्या लास्ट में? रीडायरेक्ट टाइप हो गया।
उसकी बैक फ्लिप बहुत हो रही है। उसकी दूसरी बार बैक फ्लिप हुई, या तो पता नहीं बहुत ज़्यादा तेज खेलना चाह रहा है, क्या चाह रहा है। सेंटर में बॉल रुक के मिल गई, बढ़िया था। माय बैड फॉर दैट मिस। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ा, एक आधा गोल तो ऐसे ही। ओ चांस फॉर रिडेम्पशन, बहुत तगड़ा गोल होता अगर हो जाता तो। तब से लेफ्ट राइट ही खेले जा रहा है। जूस मिस कर गया, पैड भी मिस कर रहा हूँ। नाइस। The vibe is gonna be lit tonight. ये क्या क्या हो रहा है इस गेम में पिछले आधे मिनट से? ए, ये गोल में कैसे गई? मैं तो इतने एंगल पे आके मारी बॉल। एक सेकेंड। हाँ आई, ओ भाई, I guess they have to counter own goal with an own goal. तुम वैसे एसएम खेल पाते हो, नहीं खेल पाते हो? अरे मैं कटा रहा था उनको। ओए हाउ इज ही नॉट डेड? देख के पीछे आ रहा है। गए अब तो खत्म है गेम, अब भी नहीं कर रहे। दिस इज इजी, डैम इजी है ये। मुझे तो C2 जैसी फीलिंग आ रही है। Got a feeling that I'm going under. Arey, but tell me if you are comfortable with ASM or do you play India only? Well, मुझे पक्का मिलेगा सरप्राइज फॉर द 12th बर्थडे। बढ़िया। What are you hoping for?
अबे यार उसने कैसे बम किया? भाग भाग भाग। बच गए। ओए ये भी डेमो हो जाता, अब भी नहीं हुआ। ओ भाई मेरे को लगा अपोनेंट आ रहा है मेरे पीछे। यार ये नहीं पसंद आता मुझे बस। देख देख भाई क्या मिल रहा है इन टचेस से। बची कैसे नहीं? नहीं मेरे को बचा लेना था ये तो। Nice. Animals like animals, oh. La la la, you can't deny. Oh, close. अबे मैंने ऊपर फेंक करके नीचे मारा, उसने वो भी पकड़ लिया। मैं पास के लिए जंप किया था। इतना वाइड। अच्छा लेफ्ट मुड़ चुका हूँ मैं, लेकिन मैं डेमो हो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कभी कभार नहीं से भी वो बूस्ट पे ही देख के डेमो करेगा।
हेलो, ये गिर गई नीचे। अरे सॉरी, कोई बात। हार जीत तो चलती रहती है। तो गाने एंजॉय कर रहा हूँ बस। पहले से थोड़ा फास्ट खेलते तो शायद जीत सकते थे। वो एनोइंग गेम खेल रहे थे, कोई बात नहीं। नहीं, मैं आ रहा था, मेरे में मैंने पॉप भी करी, लेकिन वहां पे बाउंस कैसे हुई मेरे को नहीं पता। ऐसे वो ये वही लोग है क्या? It's not the same. देख कुछ भी कर रहे हैं ये लोग ना। जुलूस। उसी क्या वो गोल में। अरे भाई क्या हो रहा है इस गेम में? कभी कभार अजीब सा हो जाता है भाई ये गेम। यार वो सेव अच्छा था। 130 हो गई है अभी। आज तो 100 से नीचे तो कोई शॉट ही नहीं जाने दे रहा है गेम। कह रहा ये लो एक और पिच लो। इनको फेक करने का फायदा नहीं है, ये लोग रुकने वाले नहीं है। मार देना चाहिए। अरे यार क्या होता रहता है इस गेम में। यार मेरे में मैंने मारी यार ढंग से, क्या था ये? मेरे में तो हिट होना चाहिए था। अच्छा उसमें क्लिक कर दी लाइट। अच्छा एंगल भी बदल गया ना। कैसे पहुंच गए? ये बहुत बेकार गेम खेल रहा है जो वाइकिंग करके बंदा है। डेमो नहीं हुआ?
भाई ये गेम बिक चुकी है। वो डेमो कैसे नहीं हुआ? अरे बाप रे 350 ये तो होना ही था। My bad. Waiting for me. Arey, you didn't get the boost, yeah? भाई यार ये गेम मैं जंप करके फ्लिक कर चुका हूँ। मुझे भी सुनाई दे रहा है भाई कहाँ है मेरा अपोनेंट। अब ये भी डेमो नहीं हुआ भाई ये गेम। ये लोग डेमो कैसे नहीं हो रहे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ओह वाओ वाओ, इतनी बिकी हुई है ना ये गेम भाई, इतनी बिकी हुई है। ओए भाई हो गया भाई मेरा, बस हो गया। बाप रे fighting against all odds। ऑनलाइन गेम में कैसे हो? अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान बस। With me, yeah. These guys are good. भाई घंटा good. घंटा good. Literally. अगर लक उनकी साइड पे ना होता ना, कुछ भी नहीं उखाड़ने वाले थे वो।
फेक ही हो गया क्या ये? मुझे मेरी स्क्रीन में तो बॉल आगे पीछे हुई तो मेरे को लगा जैसे इसमें 50 तो ली होगी। पहले बहुत yo to be happier. I want you to be happier. ऐसा जस्ट थोड़ा सा जल्दी आ गया। Go, I will go. चलो आए बूस्ट ले गए। ठीक है, ओके, ऐसे ही खेलना है, चलो ठीक है। Too good there. Go. अच्छा, मेरे बम से कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। अरे यार, ये उसी टाइम क्यों मिस करते हैं जब सोचो कि ये तो मार ही देगा। ये लो, अरे यार, क्या बाउंसेस हैं ये यार, क्या
इसी चेजिंग की वजह से मैं कॉम खेलना नहीं चाह रहा था। घटिया गेम खेलते हैं सारे इस रैंक पे, कोई ढंग से कुछ नहीं करता, बस चेज करते रहते ये सोच के कि दूसरा बंदा या तो मिस कर दे या फिर डेमो और चेज करते रहो बस, और कुछ नहीं करते इस रैंक पे ज़्यादातर प्लेयर। ये सीलिंग पे भी लगी अरे वाह, टू गुड दे यार भाई, टू गुड दे यार घंटा। हाँ हाँ, मज़ा ही आ गया। क्या लग है इन लोगों का। हाँ, 2 बार सेम चीज हुई मेरे साथ। These guys felt like C3 भाई, कहीं नहीं है ये कीड़े, C1 में ही खेलते रहेंगे। लिटरली कीड़ा गेम प्ले करते हैं यार। I don't need no money as long as I keep dancing. Baby, I don't need no money. ये अगर उसने सोच समझ के किया है तो वो ठीक है, वरना मुझे तो लक बेस्ड ही लग रहा था। जाओ कुछ Thankfully, I'm not on the kickoff. Ah, okay. Very nice. अरे लो फाइव रह गया। Behind me, all these lights in my
वो बम्प से स्पीड अच्छी बन गई। Nobody. I get that touch. It's in the net. नहीं, मैं ही बहुत पहले ही चला गया वहाँ से। ओह, ये अच्छा था। तुम्हारी गलती क्या थी उसमें? देख के मैंने गलत मार दिया। हाय हाय, ये नाइट वाला लग गया। छी 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 छी, नो रंग।
I'm feeling drunk and high, so high. Wow. Oculus पावर को मैं भूल गया था. What a save. है इससे बची हुई थी बॉल तब से भाई. ओ मेरी जंप खराब कर दी इसने. कर्व ने देख के भाई. अच्छा वो हाई ले गया. ये कुछ नहीं हो रहा भाई. नो इश्यूज. अरे ये जंप खराब हो गई नीचे वाली. Oh, my bad. Another game. अरे भाई ओह कैसे टच मिला यार इसको. My bad. दूसरी साइड होती तो जाता. जाते ही वहां पे भी हाय हाय छी 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 छी. माय बैड. इतना घटिया सेव किया मैंने वहां पे. छी 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 छी.
हाँ। उसने दिखाया है पूरा गंदे आदमी। अरे मिडल मार गया वो। फालतू आ रहे हैं इनसे भी। सेकंड गोल इतना घटिया खाया मैंने। छी। लिटरली बना के दी उसको बाहर जाती हुई बॉल। इंडियन सर्वर में इतने मैचेस कैसे मिल रहे हैं आज? मेरे को 2 दिन लगेंगे वापस आने में। अब नहीं लगेगी ऊपर। अब क्यों लगेगी ऊपर? अरे भाई वो यार क्या घटिया गेम है यार। वो लड़खड़ाता हुआ और दूर जाके गिरा है भाई। यार क्या वो है यार, ये क्या किस्मत है यार ये। अरे यार अरे मैं मिस कर गया। इसको बाउंस का आइडिया कैसे था? Close. हाँ। मैं बम के साथ साथ बॉल भी मारना चाह रहा था। ये आया कैसे भाई? बड़ी जल्दी आ गए। 1 सेकेंड। स्पीड फ्लिप। ओह
अरे वाह अरे उल्टे पुल्टे टच करते रहिए मीटिंग खेलते रहिए मीटिंग टचेस नहीं लेने चाहिए यार छोड़ दो प्ले ओह शिट ये तो डायरेक्ट कर लगा कोई नहीं हाँ एक और बैंगर अरे यार ये हमेशा 1 सेकंड पहले पहुंचता है अरे वाओ After all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. भाई मेरे तो पैड भी चुरा रहे हैं तो अरे शिट अब मैं कैजुअल मूड में आ गया था मैं टहल रहा था मुझे लगा उसके टीममेट को पास किए थे वहाँ तो कोई था ही human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. डेमो क्यों नहीं होगा बैक फ्लिप कैसे मिली मुझे I'm only human after all. Look at the blame on. Human after all. I'm only human. Look at the blame. Hey. Jord. क्या फालतू में कमिट किया उसने लास्ट में बहुत टाइम था उसके पास तुम लेट क्यों होते हो पिंक की वजह से है क्या ये 10 या 20 बूस्ट में ही मारा मैंने जो भी मारा वो बूस्ट देख के मेरे को एंजाइटी हो रही थी कि पता नहीं पावर आएगी नहीं आएगी कहाँ जाएगी बॉल
हाय हाय मैंने मिस कर दिया पीछे चलो मैं गिर गया यार लास्ट में उसने मेरे पे ही मारी थी डेमो कैसे भाई हो जा वेव डैश यार देख के डेमो करेगा जा सकता बहुत तेज मार दी उसने मेरे एफपीएस थोड़े कम आ रहे हैं अरे बार जी नाइस I'm only human after all You didn't get there, boost. अरे अभी तो तेरा टीममेट गया है रुक जा यार चेजर Taking a beauty to the bad. Oh, I clipped him, but I didn't get the demo. ये तो भाई गलत था। हाँ, बच गया। क्लिक हो गया। नहीं यार, मैं क्यों जाता हूँ इस पे? भाई जो यार मेरे को बम्प कर गया वो बम्प हो गया यार मेरे से
अब मारने लग गए बस। हाँ लास्ट सेकंड तो ऐसे ही कुछ होता है। Your mama thinks that my mind is gone, but I never was a man that didn't deserve it. Let's know it off. ये क्या हुआ? मैंने जब करी फिर मेरा वापस ट्रैक्शन बन गया साइड वॉल पे। ऐसे कैसे हुआ? Tell me why are we so blind to see? सीलिंग पे क्यों नहीं लगी इतनी तेज? मैंने ऊपर मारी यार। वो कट अच्छा था यार इसका। अरे oh! Demolish the crossbar. No issues, हाँ कोई बात नहीं भाई। देख के अरे वाह क्या हो रहा है गेम में? 5 या 4 डेमो एक साथ हुए भाई। क्या
Spotlight, moonlight, Sherlock Holmes. क्लोज था यार, बस सेव गया। और गोल है आई। क्यों गया बूस्ट से मैं? मेरे पास 60-80 बूस्ट था, पता नहीं मैं क्यों गया वहाँ बूस्ट। बॉल क्यों टच हो गई वहाँ पे यार? मैंने बड़ा धीरे मारा है, अकेले तो मैं गोल कर ही नहीं सकता हूँ, ऐसा लग रहा है। टच नहीं करनी थी यार मैंने गलती से। आएगा क्या? अरे यार, when I was drowning, that's when I could finally breathe. कितनी माइनस? अभी 30 ही माइनस हुई बात नहीं, 33 से 7 6 26 माइनस हुई है अभी। 26 यानी 3 गेम। ओए डेमो भाई, ये गेम और तेज मारना चाहिए था अपने कॉर्नर में। अरे यार कैसे नहीं पता।
I'll take the long shot. ये तो उनकी गलती थी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अभी तो भाई 1 मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट में ही थ्रोइंग शुरू हो गया। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? अरे लो, फाटक खुल गए, फाटक खुल गए, ट्रेन जा सकती है। कर रहे हैं यार ये लोग। ऊपर नीचे ये भी ठीक। भाई लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ इसमें। क्या कर रहे हैं यार ये लोग? I'll be with you from dusk till dawn. ओ पिंच हुई, इसके मुंह पे चली गई सीधे बॉल। देख के आ रहा हूँ। ये तो टीम बैट था। ओह नाइस शॉट, ये फ्लिक अच्छा था। का कंट्रोल भी अच्छा था, गिरने नहीं दिया। बॉल स्पिन भी हो रही थी, बड़े खतरनाक कंट्रोल था अगर बॉल स्पिन नहीं हो रही थी तो। देखिए हाँ अरे ओहो
ये मार ही नहीं रहा. टाइम तो पूरा खत्म हो गया. Be there whenever you need me. I need somebody who can. How just my Thought he was fixing my net error. क्या क्यों रोकू क्या? हाय ठीक. जल्दी आना चाहिए था मेरे को. देख के आ रहा है फिर से. अरे वाह नाइस. अच्छा वो मेरे को डेमो करने वाला. देखिए क्यों जाता हूँ इसके लिए. ओ बड़ा सेव नाइस.
अरे my God. अभी जाओ जाओ, अरे ah. नहीं छी 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 नहीं क्या क्या गेम किया मैंने क्यों ट्रोल ट्रोल क्यों करना है मुझे गेम नहीं खेल सकता क्या मैं हाय हाय Oh, nice flick. हाय यार ये कर जंप खराब कर देती है कुछ नहीं है बस Dead. Open net miss. Wow. क्या बाउंस था ये broken heart. वो बम्प होने के बाद भी बॉल पे ही है
से रोक के दे रहा है। अगर इससे हमें गोल मिल जाता ना तो भाई एपिक हो जाता। यार हाँ broken heart. शायद तुम जा रहे हो क्या? मैं यहाँ क्यों जीजी लिख रहे हो? वही You know that I want to be with you all alone. You know that I want to be with you all the time. You know that I want to... ये क्या था? Make you mine until I'm with you. अभी हम इनसे ही जीते थे क्या? हाँ, नीचे से। सॉरी। अरे ये कहाँ से जा रहा है बॉल? अरे
Sorry. नहीं अरे वाह ये वाला गाना अब सुना ही नहीं दे रहा है Oh shit, my bad. जा यार Oh, good. Bye G. GG. Another love. Okay. मैं भी एक दो गेम खेल के जाऊंगा चलो थ्रीज देखते हैं थ्रीज मजे के लिए खेलेंगे जो थ्रीज देखते हैं बहुत क्योस होगा लेकिन देखते हैं You
Looking with the force. No reset. अच्छा ये वाली मिल गई, जिसमें नहीं लगता है ना नहीं मिलेगी उसमें मिल जाती है। थ्री इसके लिए काफी लेट हो गया, देखते हैं टू अगर एक आधा जल्दी मिल जाए तो। अबे ये विकेट आ गया, विकेट एक्सी आ गया। Something stupid for not to you.
much Acer Dominus players without brains? कितनी देर हो गई है मिड रनिंग में? मैच मिलेगा आज? कैसे नहीं दी यार वो रीसेट? Uptown, fuck you up. Uptown, fuck you up. Uptown, fuck you up.
कैसे नहीं मिला मेरे को? So baby, put me closer in the fancy of your love. यार मेरी फ्लिप नहीं हुई, फ्लिप हो जाती है ना तो ब्लॉक पड़ जाता है। पता नहीं कैसे मेरी वहाँ पे डबल जंप हुई। अच्छा, मैं बॉल के ऊपर हूँ और मैं डेमो हो रहा हूँ। ऐसा मत ले।
क्यों एरियल कर रहा है इसके लिए भाई यार? मतलब हमारा ओपोनेंट दीवार पे था तो इसने भी दीवार पे ही मारा। हाँ ये डेड सेंटर गई है 91। सारी अपॉर्चुनिटी लेफ्ट वॉल से क्यों बनती है मैच में? लास्ट में अगर वो राइट साइड होती ना, राइट वॉल, तो भाई बहुत आसान से पूरा सेटअप वेटअप बना के
don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, 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 da. भाई साहब 1 मिनट होली 150 की स्पीड थी It's not 'cause I flew. I don't even know his name. My lady is calling. I can let you Yesterday is always a different day. But you promise the next time it's going to come, you'll get another chance.
Come inside, pick up the bags on the sidewalk. Dignity and grace now slipping through the cracks. अच्छा and I can stop myself from falling. Stop myself from falling. Will you finally नहीं है बस ये इधर है बस और कुछ नहीं
गलत फ्लिप हो गई। मेरा थोड़ा सा अब वो रह गया, ट्रिगर आगे को झुका रह गया, इसलिए डायगोनल फ्लिक हो गई। What are you waiting for? वाह। Yes. अरे यार ये गलत फ्लिप क्यों हो जाती है? सही से फ्लिप होती ना, अभी इतनी दूर क्लियर होता। ऊपर नहीं लगी क्यों? क्योंकि ऊपर लग जाती तो मेरे को कंट्रोल मिल जाता।
survive. Yeah, I'm rolling through my hands. Well, I'm rolling through my hands. Oh, you should make it fun. Valentino. केजिंग का इतना गंदा कीड़ा है ना लोगों।
something just like this. Ah. Wanna race? I'm not looking for somebody. There's something just like this. When it hurts, then it hurts so much.
हमारे लिए क्या भाग गया वहाँ से ताकि पास भी न ले पाए। ओए विन 10 मैचेस नहीं हो रहा है, जीत नहीं रहे हम। For a month of smoking on the table, looking for, don't give a damn, but you don't. किया है हम लोग इसको देख के। अच्छा इसको मिल गया होगा।
काफी वॉल से दूर हो गए हैं। जल्दी जल्दी मैच बन रहा है भाई। ओके चलो ये लास्ट गेम बस हो गया।
should be willing. Things ever built to last, you're a ruin. 121 run. अभी मैंने इस बार का पास नहीं लिया है क्या? अच्छा हो भी गया है इस बार। कब शुरू हुआ था? सितंबर 4, दिसंबर 4, अभी तो एक महीना है अभी। You and I.
The way that you flick your heart gets me overwhelmed. It's the pairing but there's nothing to be afraid of. Baby, I've been thinking about disappearing. It will never change.
Just wanna give it a chance. यार क्या पहुंच जाते हैं यार ये बकवास बकवास से। इतना स्लो जा रहा है वो कॉर्नर में, इतनी तेज मिडल आ रही है बॉल।
ये मेरी टीम में आ गया। कैसे नहीं बताएगी।
बूस्ट मिस कर दिया मैंने।
बहुत आगे बढ़ा दी मैंने बहुत। मैं समझ ही नहीं पाया किस चीज़ के लिए जाऊँ। Trying to save यार दो लोग कैसे जा रहे हैं इनकी तरफ? मैं वहाँ पे इतना ऊंचा कैसे हो गया?
Keeping me alive. I don't need anything to get me through. It's keeping me alive. लास्ट में उसने क्या अच्छा शॉट मारा यार, तुमने देखा एयर ड्रिबल? वो उसने जाती हुई बॉल और स्लो कर दी, पता है? अगर उस बॉल 10 की स्पीड पे जा रही थी ना उनकी गोल की तरफ, उसने 5 कर दी भाई। और मैं सोच रहा हूँ वो थोड़ा सा ऊंचा मार देगा तो मैं बम्प कर सकता हूँ। बंदा तो भाई गजब।
wanna be just for you to take advantage. यार क्या हो रहा है यार ये कुछ अब ground reading आता है क्या अभी भी grounded ना I'll do it and start real close. You just put your lips together and come real close. So you have to do it and start real slow.
लास्ट में आके जो कचरा मचाया ना मैच में, पूरा कमबैक हो गया। लास्ट गोल में इसने जो हरकत करी ना मिडफील्ड में मिस करके, फिर वहां पे मुझे बम्प करके। हाय हाय, इतना बैड टेक ऑफ। कोई नया प्लेयर उठा के है, या तो नया प्लेयर है या मर्स अकाउंट है।
इतने चांसेस मिल रहे हैं। अरे यार चलो ये लास्ट गेम ये जल्दी भी बन गया। अरे यार ये साइड वॉल से जंप था। Think about you, right? That's the
अच्छा वो स्मर्फ कर रहा है. The longer you wait, the more matches you will be considered for. वो तो ऑफिस है जो पहले क्यू में है वो ज़्यादा ऑप्शंस खुले रहेंगे उसके लिए. Every time.
हाँ 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 वाह all of my fingers happy ever after I wish you the I look forward to हाय मेरी टीम में क्या कर रहे हैं Even when you find the beautiful
Ads. Which ads? Which ads? भाई मेरा टीममेट पता नहीं क्या गधा आता है यार, ये क्यों आता है यार? दोनों बार आया ये और दोनों बार मैच हरवाया इसने। गधा पागलों की तरह आगे खेलता रहता है। बोनेट से लगना चाहिए था। ये क्या था? वो गाड़ी को क्या हो गया टच को? भाई वो
ये स्मर्फ कर रहा है भाई, मेरे को पक्का पता था पिछले गेम भी। अरे मेरा बर्थडे स्टार्टेड, हैप्पी बर्थडे। मुझे लगा तुम सो गए होगे। वापस आ गए, वापस गेम में आ गए। भाई इन लोगों को सेटअप बन के मिलता है और ये लोग ये करते हैं। वेव डैश पे चल रहा है और उसका टीम में भाई बूम की आवाज गायब हो गई चिप्पी चिप्पी की वजह से। लास्ट गेम है बस मेरे लिए। मेरा हो गया भाई, ऐसे नहीं बची है। टच लगा भी मेरा या पिंग में वो खा लिया उन्होंने पिंग टच। कैसे टच मिल गया यार उसको, क्या बकवास गेम है यार। अभी तक तो वो एक दूसरे को बम्प कर रहे हैं यार, अभी नहीं बम्प किया इन लोगों ने एक दूसरे को।
होगा। गेम है ये। वैसे कल स्कूल भी है आखिर। बर्थडे है ना, कैन डू एनीथिंग आई गेस। मैं तो हो गया भाई, मैं तो मेंटल भी गया और मैं तो खुद भी गया ही हूँ। बस हो गया मेरा भाई, मैं जा रहा हूँ और नहीं झेला जाएगा मेरे से ये गेम। बहुत पागल बन लिया मैं। छोड़ना ही पड़ेगा भाई, छोड़ो इसको, दूसरा गेम खेलेंगे कुछ। आज नहीं, बाद में। अजीब सा हो रहा है इस गेम में, पता नहीं, एक जीतो एक हारो, एक जीतो एक हारो, यही चल रहा है जब से। चलो भाई, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।